Hello, good evening and welcome to this class of Economy Current Affairs. I hope you can all see and hear me. If you can see and hear me, please write yes in the chat. Although आपकी chat बहुत fun है to read. You know IPL में क्या चल रहा है, धोनी जी overhyped हैं या नहीं है. Should not be something that you should be worried about. But all this fun for me also to read all of this. Hope you're all doing well. I'm good. Thank you for asking. I hope you're all good too. मैंने भी सोचा था एक बार आपसे आई विल टॉक टू यू अबाउट प्रीलिम्स. एक बार आई थिंक पहले वही बात कर लेते हैं, देन विल कम बैक टू एग्रीकल्चर. आज हमें एग्रीकल्चर खत्म करना है. जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. या सी द थिंग इज कि अभी आपको यूट्यूब पे एंड मतलब नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबॉडीज मिस्टेक, इवन मुदित सर हैज सच अ वीडियो आउट. You will see on YouTube right now that a lot of people will be talking to you about how you should have your strategy in the last 60 days. 2 months are left. Everybody will be talking to you about कि अरे यार ये strategy रख लो या this is what you can follow, etc. etc. I will give you a simple suggestion. We had a plan that we had made. Step का एक plan था. Stick with it. ठीक है? Don't change. देखो होता क्या है, last 60 days, last 45 days, last 30 days, last 15 days, last 10 days doesn't really work. ठीक है? ब्रॉडली अगर मैं बात करूं कि प्रीलिम्स का आइडिया है क्या, लेट्स टॉक अबाउट इट. दिस वाज अ लॉन्ग पेंडिंग डिस्कशन. मेरे को करना था ये आपके साथ, बट नाउ दैट आई सॉ सच कमेंट्स इन द चैट तो एक बार कर लेते हैं. या सी द थिंग इज, यहाँ पर व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, लेट्स से व्हाट इज द की इंग्रेडिएंट. द की इंग्रेडिएंट इज यू ensuring that you don't have avoidable mistakes in the paper. Avoidable mistakes का क्या मतलब है? लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है और आप पेपर में जाके गलत करके आ गए. इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको ग्राफ बनाना आता है, आपको सब पता है, और आप पेपर में गलत करके आ गए. जितने भी लोग आप लोग इस क्लास में हैं, honestly tell me, if you are someone who has failed in the prelims before or not qualified the prelims before, is it not because of the fact कि आपने कोई avoidable mistakes करी? जितने भी लोग, आप कई लोग तो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होंगे, मे बी दे विल नॉट हैव दिस एक्सपीरियंस, बट इफ यू शेयर योर स्टोरीज, एवरीबडी एल्स विल आल्सो रियलाइज. वोंट यू अग्री दैट everyone who has not made it to the prelims or not made it through the prelims at least once, isn't the story very clear that there were questions that you knew जो आपको आते थे, but in the idea of over chasing information, you know, आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चेज कर रहे हो, बहुत ज्यादा चेज कर रहे हो, उस चक्कर में आपने वो बेसिक सोर्सेस, बेसिक चीजें रिवाइज नहीं करी. वहां पर उन्हीं बेसिक सोर्सेस के क्वेश्चंस थे, वही बेसिक सोर्सेस के क्वेश्चंस जो आपको आते थे, आप गलत करके आए और आप प्रीलिम से बाहर हो गए. राइट? द प्रॉब्लम इज बेसिक सोर्सेस डज नॉट मीन एवरीबडी नोज दिस. ये हमारी मिसकंसेप्शन होती है. बेसिक सोर्सेस भी नॉर्मल लोगों को नहीं आते यार. मोस्ट पीपल डोंट नो दिस. अगर बेसिक सोर्सेस के सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस लेट्स से आर फ्रॉम इकोनॉमी के बेसिक सोर्सेस, लेट्स से जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स से जो क्वेश्चंस आएंगे, या पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कह लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कह देते हैं, ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज कह देते हैं, इन बेसिक सोर्सेस के क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस हैं, आपको आते हैं, आपने पढ़े हुए हैं, आपने पहले भी देखे हुए हैं. बेसिक सोर्सेस के क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में गलत करके आए. आप इस दिन प्रेशर में आके, या बिकॉज यू नो spend time over chasing random information and random facts, लॉजिकली नहीं पढ़ा, एंड में किसी ने कह दिया शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, किसी ने कह दिया ये एकदम से करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो, पीटी 365 का एक अपडेटेड वर्जन आ गया, वहां आपने 3-4 दिन निकाल दिए, कोई एक्चुअल प्रोडक्टिविटी नहीं निकली उससे. यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपने गलत किए और फिर प्रीलिम्स का कट ऑफ आपने मिस किया बाय लेट्स से लेस देन 8 मार्क्स. बता दो ये स्टोरी हुई है ट्रू या नहीं आज तक. यू कैन टेल मी इन द चैट if this is a wrong assumption or a right assumption.
है ना, ये बात आप रियलाइज कर रहे हो ना कि दिस इज व्हाई थिंग्स गो रॉन्ग, एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस हैपेंस। इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इफ एवरीबडी इज सेइंग दैट यस दिस इज ट्रू, दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, देन व्हाई डज दिस हैपन, इस बारे में बात करते हैं। देखो यार, द रीजन इज वेरी क्लियर। द रीजन इज दैट एंड में पैनिक एंड फोमो, ठीक है, दुनिया बैठी है पैनिक और फोमो क्रिएट करने के लिए आपके लिए, ठीक है, इस टाइम पे, राइट। इन पैनिक you will take decisions that you ideally would not take. You will take steps that ideally you would not make, right? इस टाइम पे you will see, अभी तो मार्च है, अप्रैल में you will see, maybe अप्रैल 1st 2nd को people will come out and launch courses also कि अरे ये कर लो वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and not courses of let's say a subject, जैसे अब मेरे को अगर environment पढ़ाना है next, of course I will launch that, but that is in line with a general plan that we have made. हमने एक स्टेप का प्लान बनाया, हम उसको फॉलो करते रहते हैं रादर देन गोइंग आफ्टर समथिंग एल्स। मुझे पता है कि स्टेप का प्लान 100% आपने एग्जीक्यूट अभी तक नहीं किया है, आपने क्या, मैंने नहीं किया है, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। मैं 6 जनवरी को बैठ के अगर कह रहा हूँ कि 20 अप्रैल तक मेरा प्रीलिम्स का सब कुछ हो जाएगा, इस डे पे ये होगा, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। बट ब्रॉडली हैव वी फॉलोड इट? यस। हमारा अभी तक हमने जो स्टेप में प्लान बनाया था, अगर हम उसको फॉलो करते जाएं तो एक बार लेट्स लुक बैक एट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन। ब्रॉडली बात करते हैं, ब्रॉडली। मैं सब्जेक्ट्स लिखता जाता हूं और आप मेरे से आप बता देना अगर आप अग्री करते हो या नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यहां पर जो नहीं हो रहा वो भी मैं लिख देता हूं। एनवायरमेंट हमने करना है अप्रैल में, है ना, एनवायरमेंट हमने करना है अप्रैल में। सीसैट को भी एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ये हमने करना है अप्रैल में, एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डू दिस टिल अप्रैल 20। दो चीजें और लिख देता हूं यहाँ पे, एक आईआर लिख देता हूं, आईआर हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, आई थिंक 1 or 2 क्लासेस विद लेफ्ट विल बी लेफ्ट विद द आंसर, सो लेट मी राइट 60%। ये सब्जेक्ट्स हम ब्रॉडली पढ़ चुके हैं ना, राइट। वी व्हाट डिड वी प्लान कि 20th अप्रैल को जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, राइट वन मोर थिंग जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, आई राइट वन मोर थिंग, करंट अफेयर्स। इसमें मान लेते हैं चलो हमारी 50% है प्रोग्रेस। साइंस एंड टेक का तो मैंने ही करा दिया आपको, इकोनॉमी के हम कर ही रहे हैं, बाकी मुदस्सर की क्लासेस भी आपने देखी होंगी आई एम श्योर। अब इस बारे में एक बात बताओ, हमने क्या प्लान किया था व्हेन वी स्टार्टेड आउट, दैट ये सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी हैं ये हम एक बार अप्रैल 20 तक कर लेंगे। एक बार करने का क्या मतलब कि हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे दैट वी विल बी एबल टू डू देम अगेन। हम ये सारी चीजें दोबारा 3 दिन में रिवाइज कर लेंगे। कि मैं आपको बोलूं कि यू हैव 3 days नाउ रिवाइज पॉलिटी, तो आप कर लोगे। यू हैव 3 days नाउ रिवाइज ज्योग्राफी, तो आप कर लोगे। यू हैव 3 days मॉडर्न हिस्ट्री में तो लगेंगे नहीं, इकोनॉमी में हो सकता है 4 लग जाए बट फिर मॉडर्न हिस्ट्री में 3 नहीं लगेंगे, ज्योग्राफी में हो सकता है 4 लग जाए तो फिर साइंस एंड टेक में 3 नहीं लगेंगे, एंशियंट मेडिवल में हो सकता है 4 लग जाए बट देन आईआर में 3 नहीं लगेंगे। तो ब्रॉडली लेट्स से 3 days पर सब्जेक्ट, 3 days पर सब्जेक्ट। और सीसैट को इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि सीसैट तो हम अप्रैल में ही कर रहे हैं। तो 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, ब्रॉडली ले रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ रेफरेंस, 3 यहाँ, एंड इसको मिला के मैं 3 बोल देता हूँ, ठीक है। सो हाउ मेनी आर दीज आर 24 days। So 24 days now I will have to revise again these subjects। इसके बाद भी ना 5 रिजर्व डेज बचेंगे जिसमें आप अपने बैकलॉग खत्म कर सकते हो, एंड इसके बाद भी आपके पास एंड में 9 days बचेंगे। एवरी वन ऑफ दीज 3 days, ये जो 3 days यहाँ पर लिखे हैं इसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट देंगे, एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे,
फुल सिलेबस फुल लेंथ टेस्ट, एक सीसैट का टेस्ट देंगे, पीवाईक्यूज रिवाइज करेंगे, और बाकी पीवाईक्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे लेट्स से पॉलिटी के 3 डेज आए तो पॉलिटी रिवाइज किया, एक फुल लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट दिया, एक सीसैट का टेस्ट दिया, पीवाईक्यूज को, पॉलिटी के ही पीवाईक्यूज को दोबारा देखा और रिवीजन करी। पहले ये फॉलो करेंगे, फिर दोबारा से 5 दिन हमारे पास रिजर्व है, कुछ ऊपर नीचे हो गया, और 9 डेज में फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से 1 डे में एक बार ये सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। इसके बाद मान लो आप ये सब कुछ एग्जीक्यूट कर लो जैसा बोर्ड पे लिखा है, ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी 100% एग्जीक्यूशन, बट प्रीलिम्स में भी तो 100% स्कोर तो नहीं चाहिए ना यार, हमें तो 45% 46% स्कोर चाहिए। अगर आप बिना सारा प्रेशर हटा के, रिमूव ऑल द प्रेशर एंड जस्ट डू दीज थिंग्स प्रॉपरली, डू यू नॉट थिंक विल बी एबल टू मेक इट? क्या लगता है आपको, अगर आप ऐसा कर लोगे तो क्या कोई बेसिक सोर्स का बेसिक क्वेश्चन बचेगा? पहले इस बात का जवाब दो। अगर आप ये एग्जैक्टली जो बोर्ड पे लिखा है वो कर लोगे तो क्या कोई बेसिक सोर्स का बेसिक क्वेश्चन बचेगा क्या? यस और नो? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, बेसिक सोर्स से था, आपने सुना ही नहीं हुआ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं बचेगा ना? तो बस ये कर लो यार। डज दिस लुक वेरी डिफिकल्ट? ये जो बोर्ड पे लिखा है क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं, ये एग्जीक्यूशन वाइज मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि प्रेशर, क्योंकि रैंडमली कोई आके कह देगा यार लास्ट में ये पढ़ लो, ये शॉर्ट नोट। आप याद करो जब मैंने स्टेप स्टार्ट किया था वॉइस नोट्स में, कितनी बार मैंने एक ही बात आपको बोली है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई सेड द सेम थिंग टू यू ओवर एंड ओवर अगेन, कि अभी आपको मैं बहुत ज्यादा काम करा रहा हूँ, जैन फेब में बहुत ज्यादा काम था, फेब में तो बहुत ही ज्यादा काम था, दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मेहनत लग रही थी, बैकलॉग इकट्ठे हो रहे थे, सब्जेक्ट पूरे नहीं हो रहे थे, हो रहा था ना ये। तब मैं आपको वॉइस नोट्स में हर बार एक ही बात बोल रहा था, एवरी टाइम आई सेड द सेम स्टोरी। आपको अप्रैल में इसका फायदा नजर आएगा। बोला था या नहीं बोला था? बोला था ना? अब बताओ। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन, ये जो बोर्ड पे लिखा है, जहां तक मेरी बात है मैं बता देता हूँ, इकोनॉमी करंट अफेयर्स में आज की क्लास और इसके बाद 2 और क्लास लगेंगी, एक इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो लगेगी, तो 3 दिन का काम मान लेते हैं आपका, मेरा मेरा तो है ही, और आपका 3 दिन का काम और मान लेते हैं। अप्रैल 5 का टाइम रख लेते हैं, लेट्स से अप्रैल 5 और 4, ठीक है, अप्रैल 5 रख लेते हैं। अप्रैल 5 के बाद सिर्फ ये रह जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। अप्रैल 5 के बाद ये काम रह जाएगा, ये अप्रैल 5 से अप्रैल 20 में आराम से हो सकता है, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इफ ऑल ऑफ दिस is executed and then I say that let's say it's 20th April, let's say it's 25th April, आपके रिजर्व डेज भी हटा देते हैं, 25th April आ चुका है और मैं आपको बोलूं कि यार कुछ नया मत पढ़ो, क्या होगा, थोड़े से करंट अफेयर्स मिस होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 25th April आ चुका है और आपको ये एग्जीक्यूट करना है, 3 डेज हैं पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रिवाइज करना, ठीक है। मैं 3 डे का एग्जैक्ट शेड्यूल बता देता हूँ। 25th April, इट इज 25th April, यू हैव 3 डेज पर सब्जेक्ट। आपको क्या करना है आफ्टर 25th April? ऑब्वियसली इस टाइम पे तो यार आपकी भी मोटिवेशन बहुत हाई होगी, है ना, कि यार चलो अब तो पेपर आ ही गया है, पढ़ना ही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 25th April आ गया है, आपको क्या करना है, 3 डेज पर सब्जेक्ट। इन 3 डेज में पहले तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। आपके पास पॉइंटर नोट्स हैं रिवाइज करने के लिए? डू यू हैव द नोट्स जो आपको पता है कि यार यहाँ पर सब कुछ लिखा है, इन्हीं को रिवाइज करना है? यस यू हैव देम, पीआरपी में वी हैव एंश्योर्ड दैट यू गेट पॉइंटर नोट्स। फिर मैं आपको कहूंगा यार कि अच्छा इस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज देख लो। कैसे करोगे पीवाईक्यूज? इसकी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल हैं, मेरे चैनल पे हैं, आपने क्लास में भी पीवाईक्यूज किए हैं, आप पीआरपी में हो तो आई हैव एंश्योर्ड, मैंने तो किया ही है, बाकी भी टीम में जितने लोग हैं, पल्लवी मैम, कबल सर, मुदत सर, सबको मैंने यही बोला था कि सर प्लीज या मैम प्लीज पीवाईक्यू जरूर क्लास में करा लेना। ये आप पहले भी कर चुके हो, ऐसा तो है नहीं आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए, बट आपके पास मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी होंगी। साइंस एंड टेक की मैंने कल डाली थी, एंशिएंट मिडिवल की डल चुकी है, राइट, जो कबल सर ने की है। यू विल हैव वीडियोस फॉर एवरीथिंग ऑन 25th April, ये भी आपके पास होगा। टेस्ट की कहानी आएगी, जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, वी विल डू इट एट द सारथी आईएएस ऐप ओनली एंड आई विल ओवरसी इट, डोंट वरी। Even if you are not in PRP, we will give you at least 4 full length tests aligned with everything that's happening here.
ये भी हो गया। सीसैट की एफएलटीज की बात आएगी कि सीसैट के टेस्ट करने हैं, कोई एफएलटी मत करना, इवन सारथी आईएएस का हो ना तो भी मत करना, बस प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, एक्चुअली प्रीवियस ईयर का पेपर कर लेना एज इट इज। ये आपको करना है 25 अप्रैल ऑनवर्ड्स। इसमें भी जहां जहां मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, आई विल हेल्प यू रिवाइज। मैंने सोच रखा है ये, चाहे जैसे मैंने जीएस3 पढ़ाया था 12 घंटे लगा के, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाई दूंगा, बाकियों में भी आई विल हेल्प यू रिवाइज। और क्या दिक्कत होती है यहाँ पे, व्हाट इज द अदर प्रॉब्लम दैट्स लेफ्ट, कि यार मेंटरशिप नहीं हो पाती, इस टाइम पे टेंशन होती है, आप इस टाइम पे कोई ना कोई स्टूपिड डिसीजन जरूर लोगे। डोंट माइंड मी सेइंग दिस वर्ड, क्योंकि मैंने खुद बहुत स्टूपिड डिसीजन लिए हैं इस टाइम पे, राइट। एक फिल्म से एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले होता ही है, ये होगा। तो इसके लिए क्या सोचा हुआ है कि एवरी सैटरडे आफ्टर दिस टाइम, एवरी सैटरडे I will keep a 1 hour mentorship session with you just to remind you of the same thing that I'm telling you now. जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, यही बात मैं आपको बार बार बोलूंगा, just to reinforce this thought। और सैटरडे को क्यों रखा है, संडे को सबका टेस्ट होता है, संडे को ही प्रीलिम्स होता है, संडे को वो डे आता है, संडे को एक हफ्ता और कम हो जाता है, तो सैटरडे नाइट को सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होती है, सैटरडे नाइट को मैं आपके साथ हूँ। ये वाली रिविजन में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, पीवाईक्यूज की मैंने आपको वीडियोस दे दी, एफएलटीज हम बना देंगे आपके लिए। और मैं बता रहा हूं, हम बिल्कुल यूपीएससी को एमुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम एफएलटीज ऐसे बनाएंगे कि ए आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, एंड बी उससे एक्चुअली रिविजन हो। ये भी अ प्रोसेस ऑफ रिविजन इन टाइम है, क्वेश्चन बेस्ड रिविजन है, राइट। और सीसैट के टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर करना, हमारे भी टेस्ट मत करना, प्रीवियस ईयर पेपर ही करना, मैं खुद ही कह रहा हूँ, क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं है। इसके अलावा आपने क्या क्या किया है, आपने एलएमएस किया है, एलएमएस में आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे अब तक, कितने एलएमएस अटेंड कर लिए होंगे, एटलीस्ट 2000 क्वेश्चंस कर चुके होंगे आप, राइट। एलएमएस, सैटरडे टेस्ट, संडे टेस्ट मिला मिलो के, पीवाईक्यूज मिला के 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। मुझे बताओ ये क्या बहुत मुश्किल है क्या एग्जीक्यूट करना? तो डरना नहीं है यार, ये है डिस्ट्रॉयर नाउ, यू हैव डन द हार्ड वर्क। अगर आपने 3 महीने, जैन फेब मार्च, मार्च आ गया, जैन फेब मार्च, ये जो 3 महीने अगर आपने एफर्ट किया है, राइट, या जो बैच 1 में है उन्होंने नवंबर से जो एफर्ट किया है, तो एक्चुअली ये एग्जीक्यूटेबल है। पहले चलो लेट मी आस्क यू, डज दिस लुक एग्जीक्यूटेबल? ये लग रहा है एग्जीक्यूटेबल आपको? डज दिस लुक एग्जीक्यूटेबल और नॉट? लग रहा है ना एग्जीक्यूटेबल? तो बताओ यार क्यों टेंशन हो रही है? टेंशन है फॉर फियर ऑफ फेलियर, है ना, फियर ऑफ फेलियर की टेंशन है कि नहीं होगा तो क्या। ये टेंशन तो नहीं है ना कि सिलेबस खत्म नहीं होगा। अगर आप रेगुलरली रिलीजियसली पढ़ रहे हो तो ये टेंशन तो हो ही नहीं सकती, हम तो बहुत इन एडवांस सब कुछ कवर कर रहे हैं, राइट। टेंशन किस चीज की है? फियर ऑफ फेलियर है, एम आई राइट? देयर इज फियर ऑफ फेलियर। तो इसका काम अभी अभी सॉल्व कर लेते हैं फियर ऑफ फेलियर को, ठीक है, राइट नाउ लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। चलो मैं आपका सबसे बड़ा फियर अभी सॉल्व करता हूं, प्रीलिम्स नहीं होगा तो क्या करोगे, यही क्वेश्चन है ना दिमाग में, दिस इज व्हाट इज कॉजिंग टेंशन, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अभी लिख लेते हैं, if our prelims we don't clear prelims, if we do not, चलो और थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, if we do not qualify, if I do not qualify the prelims cutoff, what will I do? यही फियर है। सब्जेक्ट का तो फेयर हो नहीं सकता, या तो ऐसा होता कि हमने सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं, साइंस एंड टेक अभी तक पढ़ा ही नहीं है, एनवायरमेंट अभी तक पता ही नहीं है कब होना है, इकोनॉमी अभी तक देखा ही नहीं है, पॉलिटी आज तक खोला ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं अब इस स्टेज पे। अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो या आप स्टेप को फॉलो कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने रिलीजियसली पढ़ाई करी है तो। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, फिर फियर होना बनता है, एंड देन यू वुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं करी है, राइट। बट अगर आपने डिसेंटली भी करी है, राइट, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी 100%। अगर जो बोर्ड पे लिखा था वो आपको एग्जीक्यूटेबल लग रहा है, इफ यू थिंक यस आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट, दैट मींस आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू यार, 8 सब्जेक्ट हैं, आपको मैं कह रहा हूँ 3 दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, आप कह रहे हो हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी, दैट मींस यू हैव स्टडीड वेल, तो आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये है, फियर यही है ना, दिस इज दी ओनली फियर, राइट। इसके अलावा भी कोई फियर है? ये फियर है ना, चलो इसको अभी एड्रेस कर लेते हैं।
लेट्स से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या करोगे भाई प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो? अभी बात करते हैं, क्या करोगे प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो? दोबारा दोगे ना अगले साल? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आई एम अज्यूमिंग कि मेंस की प्रिपरेशन भी एकदम टॉप नॉच तो नहीं हो सकती, राइट? तो ये भी हो सकता था कि मेंस ना हो, ये भी हो सकता था कि मेंस हो जाए फिर इंटरव्यू ना हो, राइट? इन सारे केसेस में आप इस केस में क्या करते, राइट? एक्चुअली आई विल राइट फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। मुझे लगता है इन दोनों केसेस में तो यू वुड रीअपियर, राइट? तो आप प्रीलिम्स में फेल हो या आप मेंस में फेल हो या आप इंटरव्यू में फेल हो, आउटकम तो चेंज नहीं हुई, आउटकम तो वही है, रीअपियर। इट्स ओनली इन योर माइंड, आउटकम तो वही है ना यार, काम तो वही है, पढ़ाई करोगे उसके बाद भी, सो यू विल रीअपियर। यही है ना? अब प्रीलिम्स ना हो या मेंस ना हो या फिर इंटरव्यू ना हो, द आउटकम इज द सेम, तो ये फिर हटा दो दिमाग से, गिव योर बेस्ट शॉट। इफ यू नो कि आउटकम सेम है तो क्यों फेयर लेना, क्या क्यों डर रहे हो? डरने से एक लेवल का डर इंपॉर्टेंट होता है, एक लेवल का डर आपकी आउटकम को बेटर करता है, आपकी पढ़ाई को बेटर करता है, आपको टाइम वेस्ट करने से बचाता है। बट अब तो वैसे ही वो टाइम जा चुका, अब तो कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है ना? तो अब आपका अगर आउटकम सेम है तो बात खत्म, आगे बात कर लेते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट, ठीक है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? यहां पर दो पाथ है, या तो यू विल हैव टू लुक फॉर अ बैकअप प्लान या यू विल थिंक यू विल रीअपियर। अगर रीअपियर वाली स्टोरी है तो ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर फैमिली, योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगर यही स्टोरी है तो ठीक है, फिर तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। एंड आपको पता है in your heart of hearts, even right now, you know whether you will be able to reappear or not, whether your family will allow you to reappear, whether you are willing to reappear। आपको अपने heart of hearts में पता है क्योंकि आप ये सिचुएशन इमेजिन कर चुके हो, है ना? तो अगर इस सिनेरियो में हो तो ठीक है। सेकंड सिनेरियो है बैकअप प्लान। अब इसकी बात कर लेते हैं। बैकअप प्लान में प्रॉब्लम पता है क्या है, फियर कहां है? फियर है अनसर्टेनिटी का। ये है फियर कि यार क्या करेंगे पता नहीं। अगर आपको मान लो अभी पता हो कि मैंने अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं कैट की तैयारी करूंगा, नवंबर में कैट है और मेरा मन है आईआईएम जाके एमबीए करने का, अगर ये चीज अभी से क्लियर हो तो नहीं है ना कोई फियर, तो दो अपना पेपर यार, बाकी तो देखेंगे। लाइफ में देयर इज नो लिमिट टू अनसर्टेनिटी यार, कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है एग्जाम क्लियर हो जाता, एनपीए जाते, आप आईपीएस बन जाते, वहां जाके आपकी एंकल इंजरी होती है और आपको कहते हैं कि नहीं अब आप सर्विस में कंटिन्यू नहीं कर सकते। हुआ है ना किसी के साथ, जिनके साथ हुआ है इसी कमरे में बैठे हैं साइड में, राइट? 2 बार एग्जाम क्लियर करके 2 बार आईपीएस बने और एंकल इंजरी हो गई और नेशनल पुलिस अकेडमी से निकाल दिया, राइट? कोई मेहनत में तो कमी नहीं रही होगी उस आदमी की, आप जानते ही उनको, जितनी वो मेहनत वैसे करते हैं। आई एम श्योर यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एफर्ट मुदित सर पुट्स इन, बट नहीं हुआ। तो अनसर्टेनिटी की कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमें इस अनसर्टेनिटी को ऑब्जॉर्व करना है और जितना कम कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। जितनी कम होगी अनसर्टेनिटी उतना कम फियर होगा। तो अभी डिसाइड कर लो, डिसाइड राइट नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अभी कर लो ना कि यार अच्छा टुडे सिट विद योर फैमिली, आज सैटरडे है ना, कल संडे इसी टाइम में लगाओ, भूल जाओ कोई मॉक टेस्ट वगैरह, एक दिन नहीं दोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है? सिट विद योर फैमिली, सिट विद द फ्रेंड्स हु एक्चुअली आर योर फ्रेंड्स, राइट? नॉट द फ्रेंड्स हु गेट जेलस ऑफ योर सक्सेस एंड हु आर हैप्पी ऑन योर फेलियर। सिट विद देम एंड से कि यार अच्छा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। और एक बार ये फैसला कर लेते हैं अभी, ऑप्शंस आपके सामने, राइट? इवन इफ one of the things you might write is I will figure it out after prelims, I will make this decision after prelims। ये भी हो सकता है कि आपको अभी नहीं पता और आप कह रहे हो कि यार मैं आफ्टर प्रीलिम्स डिसाइड करूंगा कि मैं क्या करूंगा अगर मेरा नहीं हुआ तो। स्टिल एटलीस्ट योर माइंड नाउ हैज अ सर्टेनिटी। प्रीलिम्स आप देके आओगे 2 दिन में आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा, आफ्टर प्रीलिम्स डिसाइड कर लेना। बट एटलीस्ट टेल योर माइंड दिस, क्रिएट सर्टेनिटी। इफ यू डोंट क्रिएट सर्टेनिटी देन यू विल बी इन फियर, देन यू विल बी इन टेंशन। तब और ज्यादा कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, एंड देन दिस फियर कि नहीं हुआ तो ट्रांसलेट्स टू ये रिसोर्स नहीं पड़ा तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फियर है व्हाट इफ आई डोंट क्वालिफाई। नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस फियर इज व्हाट इफ आई डोंट रीड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट और दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, व्हाट इफ आई डोंट रीड अपडेटेड PT 365 पार्ट 3,
देन व्हाट, उसमें क्वेश्चन आ गए, वो मैं नहीं कर पाया, उससे मेरा नहीं हुआ, ये फियर है। इस वजह से क्या होता है, बेसिक सोर्सेज इग्नोर करते हैं। इट्स ऑल अ साइकिल, इट्स ऑल कनेक्टेड, राइट। अभी डिसाइड कर लो, एंड अगर नहीं डिसाइड हो पा रहा, लिख लो, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट इफ आई डोंट क्वालिफाई आई विल डिसाइड आफ्टर प्रीलिम्स, राइट। सबसे टफ केस की बात कर लेते हैं, और इस कैटेगरी में जो लोग हैं ना, वो एक बार इस केस को कंसिडर करना। And I know this is a difficult conversation to have, but I think it is my responsibility, frankly, because nobody else talks about this. ठीक है, मेरा काम है आपसे ये बात करना। ठीक है, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, लेट्स एड्रेस दिस टुडे। आपका लास्ट अटेम्प्ट है एंड आपका प्रीलिम्स नहीं होता, अब क्या? नाउ यू नो यू आर नॉट गोइंग टू एंटर द सिविल सर्विसेज, एटलीस्ट फ्रॉम स्टेट पीसीएस को हटा देते हैं तो एटलीस्ट आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पाओगे और आपको लाइफ में दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा। यही फियर है ना। आई नो इट्स अ हार्श वे टू से इट, बट इट्स अ फैक्ट। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर्विसेज में सब लोग खुश हैं क्या? अल्टीमेटली यार इट इज जस्ट अ जॉब। मैंने छोड़ दी ना अल्टीमेटली, मतलब सब साइड रखते हैं, बिल्कुल मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं। आई लेफ्ट इट, राइट। ऐसा क्या हो गया? मुझे सर लेफ्ट इट, राइट। क्या हो गया ऐसा? आपका अब आपका करियर अच्छा है, सो व्हाट, वो तो वैसे भी बन सकता था, राइट। बात यहां पर इसकी है, अगर ये फिगर आउट हो गया, इट इज जस्ट अ जॉब। लोग करके भी तो खुश नहीं है। डू यू थिंक एवरी आईएएस ऑफिसर इज हैप्पी? डू यू थिंक एवरी आईएएस ऑफिसर इन देयर होम कार्डर इज हैप्पी? Do you think every IAS officer in their home cadre getting regular promotions in the positive view of the politics of that state is happy? No. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करके लोग खुश होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम क्लियर करने वाले सारे खुश हैं, राइट। एक फिगमेंट है हमारी इमेजिनेशन का कि हाँ हमें खुशी मिलेगी, हो सकता है मिले। मैं रिजल्ट की खुशी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, 2 दिन की खुशी है, हद मचा लोगे 2 दिन की खुशी है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कौन सी सर्विस, देन कौन सा कार्डर, देन पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, लवासना में क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो ग्लोरिफिकेशन बना रखी है कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, दिस हैज बीन मेड वेरी केयरफुली, दिस हैज बीन क्राफ्टेड बाय एन इंडस्ट्री that is selling dreams to you. I am part of that industry, I am admitting it, but I cannot contribute to this image कि नौकरी तो एक ही है, बाकी तो नौकरियां हैं। नहीं है यार ऐसा, क्या सब खुश हैं क्या उस नौकरी में? एंड इवन आफ्टर दैट, लेट्स टॉक ऑफ माई सेल्फ। मैंने सर्विसेज छोड़ी, राइट। माई पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी, आई केम हियर, आई थॉट आई विल टीच एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। ऑन सम डेज आई एम द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड और आई एम वेरी हैप्पी, सम डेज आई एम नॉट, सम डेज आई स्टिल हैव बैड डेज, राइट। तो इससे क्या हो गया? कभी रेडिट पे कमेंट पढ़ लेता हूँ, मेरे बारे में किसी ने कुछ फालतू की बात लिख दी होती है, राइट। अभी आपको इंस्टेंस बताता हूँ, मैंने कहा था कि टेलीग्राम पे जो लोग पायरेसी कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, एंड रेडिट पे बहुत लिखा गया उसके बारे में, मैंने पढ़ा, मुझे दुख हुआ, बट ठीक है, आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, राइट। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, इफ यू आर पायरेटिंग माय वर्क यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यही तो बोला। इस बात पे रेडिट पे पता नहीं कितनी बातें लिखी गई मेरे अगेंस्ट, मुझे बुरा लगा। मैंने टेक्निकली सर्विसेज भी क्लियर करी, सर्विसेज छोड़ के मैं यहाँ आया, अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, वही कर रहा हूँ जो मेरा मन था, बट देयर आर डेज व्हेन आई एम अनहैप्पी, राइट। तो ये इसको एक एग्जाम की तरह ही देखते हैं, ये वही है, एट बेस्ट इट्स एन एग्जाम। निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं निकला तो भी बहुत अच्छा। स्किल्स इंपॉर्टेंट है, द सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये कर लोगे तो ही दुनिया की सारी खुशी मिलनी है। एंड वंस यू गेट दिस फीलिंग कि यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आई विल गिव माई बेस्ट शॉट। दुख पता है कब होगा? व्हेन यू विल फील कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं किया, व्हेन यू फील कि यार मैं इससे ज्यादा कर सकता था बट आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, यार तब मैं इतना प्रेशर ना लेता, इट वुड बीन बेटर अगर मैं तभी फोकस कर लेता। अगर ये फीलिंग आएगी ना तो दुख होगा, उसको अवॉइड कर लो, बाकी एवरीथिंग एल्स इज फाइन, ठीक है। तो ये आज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स डिसाइड दिस टुडे, आज ही कर लेते हैं, राइट। लेट्स फाइनलाइज दिस एंड कीप दिस वन साइड, ठीक है। आई थिंक एग्रीकल्चर से पढ़ाने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्वर्सेशन है। आप कल संडे है, संडे का टाइम लो, स्पेंड इट विद योर फैमिली, टॉक टू योर फैमिली एंड डिस्कस दिस ओपनली। एक बार वो अनसर्टेनिटी हट जाएगी ना तो आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे पाओगे, राइट। लेट्स डू दिस, ठीक है। एंड अगर आपका आउटकम यहाँ पे सर्टन है, लेट्स से आपका आउटकम ये सर्टन है
या यहाँ पर आपको सर्टन आउटकम है, तो आपको तो फियर होना ही नहीं चाहिए यार। आपको तो पता है ना आपने आगे क्या करना है, राइट? यहाँ पे सारा डर दुनिया का यहीं पे है। देयर इज ओनली द फियर ऑफ द अननोन, देयर इज नो अदर फियर, राइट? कोई मारने तो नहीं आएगा ना आपको, आपका एग्जाम नहीं हुआ तो। इट्स जस्ट एन एग्जाम। नहीं होता कई लोगों का यार। इफ 10 lakh people will appear and 1000 seats are there, 9,99,000 will not clear it, तो क्या उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके बाद? नहीं है ना ऐसा। तो एक बार उस चीज को ऑब्जॉर्व कर लो कि ऐसा नहीं है। आई विल गिव माई बेस्ट, इफ आई मेक इट ग्रेट, इफ आई डोंट आई विल डू दिस। यू हैव दिस सॉर्टेड एंड you don't have to fear this exam again. Don't fear it. Fear the competition. Study harder. Try to make it. Give your best shot. But नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, right? And with all of this, it's very, very important for you to have something in your life that gives you pride other than your outcome here. Don't link your outcome in life or your pride in life or the fact that how great you are with respect to this. मैंने बहुत किया ये लाइफ में, बहुत ज्यादा. It is a recipe for disaster. कि मैं अच्छी क्लास लूं तो मैं बढ़िया इंसान हूं, अगर मैं खराब क्लास लूं या मैं पढ़ाऊं अच्छा नहीं, या मेरे अच्छे रिव्यूज ना आए, या मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, या मैंने ग्रो नहीं किया, तो मैं खराब इंसान हूं, देन आई डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी. ऐसा नहीं है, राइट? द ओनली थिंग दैट एक्चुअली मैटर्स इज द पर्सन यू आर. ठीक है? अब्सॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन, दिस फियर विल गो अवे. ठीक है? काफी लंबा प्रवचन हो गया, बट आई होप द मैसेज वॉज क्लियर. एंड प्लीज डू दिस टुमारो. प्लीज सिट विद योर फैमिलीज टुमारो एंड डू दिस, बिकॉज इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा. अप्रैल आके तो फिर ये अनसर्टेनिटी बढ़ेगी. बट लेट्स फाइनलाइज इट, आज ही कर लेते हैं ना. लेट्स डू दिस टुडे ओनली. ठीक है? आज इसको फाइनल करो और साइड करो. उसके बाद सुन लेना, कोई ऐसे आएगा एग्रीकल्चर की बातें करेगा, थोड़ा बहुत सुन लेना कि चलो देख लेते हैं भाई डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में क्या कर रही है गवर्नमेंट. ठीक है? एक्चुअली मन हल्का हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको. इतना ज्यादा फियर लेके एग्जाम वैसे ही क्लियर नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो खुशी नहीं होगी उसके बाद. राइट? इफ यू गो विद दिस माइंडसेट, दिस इज अ चैंपियन माइंडसेट, एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मेरे से खुद नहीं होता. आई एम स्टिल ट्राइंग टू develop this mindset in life. There are a lot of uncertainties even in my job, right? So there is always this mindset कि हाँ यार ठीक है, I'll give it my best shot, और फिर नहीं होगा तो देखेंगे यार. But the moment you develop this, right, उसके बाद you are not stoppable. Nobody can stop you after that. At least this is what I feel. I probably am not experienced enough to make this comment with a lot of certainty. But जितना मुझे लगता है, जितना मुझे पता है लाइफ के बारे में, I think this is it. Anyway, that being discussed, now let's come back to agriculture. Feels a bit weird. Actually, let's just take a break for 2 minutes. I don't think I can just directly transition into teaching. I'm sorry for this. Let's just take a break. And फिर यहाँ से continue करते हैं. In these 3 minutes, you can just breathe, forget everything. आज की क्लास देखो, मजा आएगा, मेहनत करके बनाइए, फिर questions करेंगे, and then we'll enjoy tomorrow's Sunday. ठीक है? Just be back after 2 minutes. एंड यस, आई एम ओपनिंग द चैट. अगर दिमाग में कोई फीलिंग है, कोई थॉट है, तो वो लिख दो. जस्ट टाइप इट आउट. यू हैव 2.5 minutes. द चैट इज ओपन. लिख दो. वॉट एवर द हार्शेस्ट फियर यू हैव राइट नाउ, राइट इट. राइट इट इन द चैट. डेफिनेटली मन हल्का हो जाता है.
अब जो भी लिखा चैट में, जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है वो पढ़ लेना. आफ्टर एवरीथिंग दैट यू रोट, जस्ट राइट बट आई विल गिव माई बेस्ट. ठीक है, चलो. अब वी वर रीडिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में हम इनपुट्स पढ़ रहे थे. इनपुट्स में देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आर लेफ्ट. वन इज टेक्नोलॉजी एज एन इनपुट. वन इज एक्सटेंशन सर्विसेज. अब देखो, agriculture in India, why is technology important and why is the government focusing on technology? A, through technology you can ensure that you are producing the best outcome. Secondly, India mein agriculture is a very low value sort of activity. Mostly we don't associate high tech or high value agriculture happening in India. Since most of the farmers are small and marginal, it becomes the government's job to infuse technology into agriculture, right? Secondly, extension services. Extension services actually in agriculture would mean research and development. We cannot increase the land under cultivation. We have limited water. We cannot infinitely supply fertilizers to the soil. Soil health is also something that's struggling with. तो अगर हम research and development करेंगे agriculture में, if we add research and development as an extension service, agriculture will have much better inputs. इन दोनों चीजों को दिमाग में रख के गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंशन. दैट ए, टेक्नोलॉजी इज नॉट समथिंग दैट द फार्मर्स विल अडॉप्ट देमसेल्व्स, राइट? बिकॉज वी जनरली डोंट हैव, considering 89% small and marginal farmers, we generally don't have very high education levels in agriculture, right? Even in agriculture you will see the youth of the country is not that happy with. अगर मैं आपको बोलूं आपको इन्फोसिस में जॉब मिल जाएगी, राइट, या किसी एमएनसी में, चलो लेट्स से बीसीजी या बेन में जॉब मिल जाएगी, यू विल बी वेरी हैप्पी. बट इफ आई गिव यू अ 50 एकड़ फार्म, कि मैं आपको 50 एकड़ का फार्म दे दूंगा, आपको एग्रीकल्चर करना है, यू विल मे बी अर्न 20 टाइम्स मोर इन अ 50 एकड़ फार्म, बट यू विल नॉट डू इट हैप्पीली. आपको लोगों को बताने में दिक्कत होगी कि मैं एग्रीकल्चर में हूँ. So taking these two things into mind, government is trying to make agriculture a more precision, high level activity. इसके लिए एक और स्कीम भी है, this is not written in the notes. It's called ARYA, Attracting and Retaining Youth in Agriculture. So government का फोकस है कि ये चीजें लाके हम एग्रीकल्चर को एक हाई वैल्यू कमोडिटी बना सकें. इसके लिए व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, एंड इसके करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं. इस बार एआई बहुत ज्यादा न्यूज में है. इकोनॉमिक सर्वे में इस बार 13 चैप्टर्स हैं. There is not a single chapter where AI has not been mentioned, and the 14th chapter is, or the 13th chapter itself is completely on AI. So AI की काफी न्यूज आई है. World Economic Forum came out with something called AI for Agriculture initiative, right? So it was saying that we will scale agriculture through public-private investment. Technology in agriculture को उन्होंने 4 parts में divide किया है इस initiative में. One is you can use it for crop planning, which crop to grow. Then smart and precision farming, that okay, I need exactly this much input, this much fertilizer, this much water to be delivered in this way. And since AI and big data can work together, machine learning, big data and AI, all parts of the 4th industrial revolution, we are trying to bring the 4th industrial revolution to agriculture. Then supply chain management, हमने देखी थी एक supply chain management government की. How does any agriculture crop get from the farm to the fork, right? Farm to fork अगर नहीं गया कोई, if farm to fork any produce has to go, supply chain has to be managed. उसमें बीच में जो भी processes हैं जो हमने यहाँ पर देखी थी, from input to production to post production, उसको manage करने के लिए हम technology और AI use कर सकते हैं. And data can become an enabler across the supply chain. If we have good quality data, we can use it to improve our inputs. ठीक है. अब इसके लिए इंडिया के कुछ initiatives हैं. I have written these government schemes here. जो government schemes हैं, I'll tell you, you should read all of them once. I'll tell you the important ones that we have to remember. This 100%, I'll teach you this also. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन यहाँ से जरूर पढ़ना, ऑल्दो आगे आएगा क्योंकि इस साल न्यूज में है, कैबिनेट ने दोबारा लॉन्च किया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को, राइट? तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल जस्ट कम अगेन, इसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द अदर वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एग्री स्टैक. एग्री स्टैक और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन मैं आपको अभी बताऊंगा. एग्री स्टैक इज सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है? तो दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट वंस जो आपको पढ़ना है. ये लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से हैं. PMFBY इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेयर वी प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स.
अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वी हैड दीज 4 न्यू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, इनको हम पढ़ेंगे। जस्ट रीड दीज वंस, वो दो जो मैंने आपको बताए हैं वो दोनों याद करने, बाकी एक बार रीड करना है। अब द अदर थिंग इज एक्सटेंशन सर्विसेज। तो इंडिया में ये भी न्यूज में है कि किसान विज्ञान केंद्र यहाँ पे है, वो न्यूज में है, न्यूज पे हम अभी आएंगे। पहले हम ब्रॉडली देख लेते हैं कि हाउ एग्रीकल्चर इज मैनेज्ड इन द कंट्री और हाउ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज मैनेज्ड इन द कंट्री। तो सबसे ऊपर ये इंस्टीट्यूट है कॉल्ड मैनेज, दैट इज एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। मैनेज स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। इससे मैनेज की फुल फॉर्म कैसे बनी मुझे भी नहीं पता, बट बनी है। इसके नीचे है एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राइट, ऐसे 4 एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके नीचे है समिति, these are state level agricultural management and extension training institute, and lastly there is atma, this is agricultural technology management agency. atma is linked to किसान विज्ञान केंद्र। किसान विज्ञान केंद्र क्या होता है उस पर भी आएंगे। केवीके इज इन न्यूज, इस पे नया मिशन भी लॉन्च किया कैबिनेट ने। केवीके इज लिंक्ड टू ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research, and SAU, that is State Agricultural Universities. So this is our ecosystem of agricultural extension services. This is where agricultural research is happening in the country. Okay. Ab, where can agriculture be used or agriculture extension service be used in agriculture? From the pre-planting stage to the marketing stage, everywhere. ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. We don't have to read this. This is actually for mains. But just to give you an idea, which crops to grow, whether to purchase seed or use own seed, how to prepare land, how to sow the seed, how much quantity of water and fertilizers are needed, how to apply these various inputs, how to harvest the produce, how to package the produce, store the produce, and where to sell the produce. ये सारे questions agriculture extension services भी आंसर कर सकती हैं, and technology भी इन सारी जगहों पे यूज की जा सकती है, right? So this is the broad framework. अब हम देख लेते हैं ये. This is the major news in agriculture this year. 7 major schemes have been approved for improving farmers' lives and livelihoods. Right? These are 7 major schemes that the cabinet has approved this year. इन सारी मिशंस का वही करेंगे, हम इनका लॉजिक समझेंगे, and once we understand the logic, we'll understand ये क्यों किया गया है. The first one is digital agriculture mission. ये तो हमारे it is in line with our inputs only. इसके बाद जो बाकी स्कीम्स हैं, they are mostly related with production. तो पहले हम प्रोडक्शन की चैलेंज समझेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, एंड देन विल कम बैक टू इट. तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्यों आया है? दिस इज लिंक्ड विद एग्रीस्टैक आल्सो. बेसिकली इंडिया हैज वर्कड वेरी हार्ड टू डेवलप समथिंग कॉल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. DPIs में क्या क्या आता है? आधार, कोविन, द ऐप ऑफ उमंग, डिजी लॉकर. बेसिकली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड थ्रू डिजिटल रूट, राइट? जैसे उमंग ऐप है, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, या डिजी लॉकर है जो हम सबके फोन्स में है, जिसमें हमारा डेटा स्टोर्ड है. टेक्निकली इट इज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बट गिवन डिजिटली. नाउ वी आर एक्सटेंडिंग दिस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू एग्रीकल्चर. इसके लिए हमने बनाया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में देयर आर 2 मेन पिलर्स. वन इज एग्रीस्टैक. एग्रीस्टैक में क्या क्या है? फर्स्ट, वी विल रजिस्टर ऑल द फार्मर्स. So we will give farmer a unique ID and create a farmer's registry. Second, we will link the farmer to their land. So we will make a village land map registry. पहले हमें डेटा मिले कि कहां पर कितने फार्मर हैं और उनका लैंड कैसा है. Only then we'll be able to put proper interventions there. तो लैंड मैप्स की रजिस्ट्री बनाएंगे and this will be linked to the farmer IDs. And I want to know how many farmers, what is the land they have, and the third thing, which is the crops that they are growing. Third thing, crop zone registry. So AgriStack is nothing but a place where I want to put all of the data of agriculture in the country in one place. I want to know how many farmers, how much land, and which crops. Only then I'll be able to help them. Once I know this, what is the second thing? Data आने के बाद second चीज मैं क्या करना चाहूंगा? I'll be asking the farmers to make better decisions or giving them certain inputs so that they can make better decisions. उसके लिए I have made decision support system. So I will then take data. Now I know how many farmers, where they are, वो कौन सा क्रॉप उगा रहे हैं. Then I will take data, and which data? Geospatial data linked to the geography of that place. उसका डेटा निकाल के then I'll ask them to make better decisions. So in decision support system I will take remote sensing data. Remote sensing satellite अब यहाँ से आपको याद आई होगी, और एक comprehensive geospatial system बना के
I will take real time information कि वहां पर क्या हो रहा है, what is let's say the weather forecasting there, what is the sort of winds that are going to flow, what is the rainfall that's going to happen, etc., and then going to make a proper decision support system to help them take better decisions. Then I will know, okay, this farmer with this farmer ID at that place growing this crop should now use this fertilizer, so that I can bring this agriculture system to through a digital public infrastructure to all farmers of the country. This is the main idea of digital agriculture mission. Along with this, I will also do soil profile mapping. Soil profile mapping की क्या कहानी है? That I will do a crop estimation survey digitally. And now I also know at a national level what crops are being grown, what crops I need next year. It will also help me have inputs for PDS, what sort of MSP I should give, etc., etc. Basically making a digital public infrastructure system properly only for agriculture. Now, let us now come to the production stage. Input वाली हमने last time mainly देख ली थी. Production stage पे आते हैं. इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम में मेन प्रॉब्लम क्या है? What is the main problem as per you in India's agriculture production system? देखो, क्रेडिट मैकेनाइजेशन तो इनपुट की प्रॉब्लम है. प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है? प्रोडक्शन से मेरा मतलब क्या है? व्हाट आर द फार्मर्स ग्रोइंग? आप कोई कह रहा है इरिगेशन में रेन डिपेंडेंसी है. यार उसके लिए तो हमने देख लिया ना कि हम कनाल्स बनाएंगे, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम करेंगे वगैरह. प्रोडक्शन में व्हाट आई वांट यू टू फिगर आउट इज व्हाट डिसीजंस आर बीइंग टेकन. फार्मर डिसाइडिंग दैट आई वांट टू ग्रो दिस क्रॉप. दिस इज द प्रॉब्लम. इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? इसमें मेन प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस. बिकॉज ऑफ दिस इज मेनली एनफोर्स्ड फॉर राइस एंड व्हीट. If this is enforced for rice and wheat, farmers keep growing rice and wheat. When farmers keep growing rice and wheat, we have oversupply of these two crops. When there is too much supply of these two crops, they will not get remunerative prices. अगर सब लोग ही wheat उगाएंगे तो wheat महंगा तो नहीं हो सकता, तो farmers will not have remunerative income. तो at best they will be procured at MSP. इससे ऊपर तो मुश्किल ही है procurement होना, है ना, because everybody has it. इससे दूसरी प्रॉब्लम क्या है? There is a lack of diversification. Diversify नहीं होगा हमारा agricultural produce. When it does not get diversified, what happens? Let's say there is horticulture. Horticulture की बात करते हैं या pulses की बात करते हैं, दोनों न्यूज में है. Horticulture, pulses and rice wheat या cereals, rice wheat system की बात कर लेते हैं. देखो, per acre yield, if you are growing horticulture crops, horticulture is flowers, fruits, vegetables. Pulses तो आपको पता है, दाल एक्सेट्रा, एंड राइस व्हीट. अगर आप राइस व्हीट सिस्टम में हो, योर एवरेज रिटर्न पर एकड़ इज 30,000. अगर आप पल्सेस में हो, आपने पल्सेस ग्रो करना शुरू कर दिए, योर एवरेज रिटर्न रीचेस समवेयर क्लोज टू 50,000. If you go to horticulture, it is 3 to 4 lakh rupees per acre. This is the average return. जब ये average return है, right, everybody will want to go towards this, or ideally everybody should go towards this, but people are not able to, because यहाँ पर ये system है. There is assured return here, so farmers are not willing to take the risk to diversify. Also, farmers are not aware that this diversification will help them. तो एक तो farmer level पे problem है. When there is a problem on the farmer level, there will also be a problem at the national level. National level पे क्या problem आएगी? When we look at horticulture and pulses, despite having so much area under agriculture, India is going to import these. India को ये import करने पड़ेंगे. When we import, prices are going to be high.
So then it will lead to people who are eating rice wheat very regularly but not eating enough pulses and fruits and vegetables. That is then going to translate into problem of hidden hunger in the country. It is also going to translate into a problem of current account deficit. ये कहानी है. So now if you were the government, what would you want to do? You would say that I want to now shift people from this rice wheat system to other areas. I want to shift them, let's say, to pulses. I want to shift them to horticulture. I want to shift them to animal husbandry. Want to shift them to dairying. कि farmers यहाँ अटके ना रहें, because मुझे भी जरूरत है. At a country level, I also want to reduce this import, and even for farmers, I want to generate a remunerative outcome. इस चीज को ध्यान में रखते हुए, this diversification problem, keep this in mind. All the schemes that we are going to read with regards to other crops now in production, all of them are going to be made with this outcome in mind. तो अब देखते हैं क्या schemes बनी. Horticulture के लिए we made up something called Clean Plant Program and Scheme for Sustainable Development of Horticulture. पहले समझते हैं क्यों आई है स्कीम, फिर समझते हैं स्कीम में है क्या. Let's first understand the why. India is, because we have huge area, बहुत ज्यादा एरिया है, not a lot of farmers are into horticulture. Still we are second largest producer of fruits and vegetables after China. But this second largest producer does not mean that we don't have to import. We are a major importer and exporter of fresh fruits, and our import is more than our export. In last year we imported 2.7 billion worth of fruits, exported 1 billion worth of fruits. तो हमारा फ्रूट्स में, एग्रीकल्चर में, फ्रूट्स में ट्रेड डेफिसिट है, डिस्पाइट हैविंग 46% ऑफ आवर पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर. अब क्या आती है इसमें प्रॉब्लम? विद अ राइजिंग अर्बन क्लास इन इंडिया, फ्रूट कंजम्पशन इज राइजिंग नाउ. अर्बन एरियाज में लोगों को लगता है हमें फ्रूट्स खाने हैं. आपने देखा होगा ये नया फैड ऑफ वीगनिज्म. वीगनिज्म इज नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट. वीगनिज्म के गार में एवोकाडो खाना इज अ बैड कॉन्सेप्ट. व्हाई? Because it is only American soft power, right? Avocados are not native to India. Veganism is native to India. But अगर आप Americans को देख के avocados खा रहे हो, right? That is a projection of American soft power, but that's happening, right? अब fruit consumption बढ़ रही है तो demand बढ़ रही है. Demand for importing foreign planting materials is also there. Rather than importing avocados, we say that let's import avocado seeds or avocado small nurseries के जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनको हम आगे प्लांट कर सकें. लेट मी गेट सीडलिंग्स ऑफ एवोकाडो और प्लांटलेट्स ऑफ एवोकाडो. आई विल प्लांट देम हियर एंड ग्रो एवोकाडो. इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस इज अ गुड थिंग. इससे क्या होगा? फार्मर हॉर्टिकल्चर पे जाएगा एंड सिंस द डिमांड इज देयर दे विल गेट रिन्यूमरेटिव प्राइसेस. ब्लूबेरी के साथ भी सेम केस है. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम है दैट इफ यू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, you import planting materials from a foreign country, that country has a very different environment and ecosystem as compared to this one. तो वहां की बहुत सारी डिजीजेस यहां आ सकती हैं, जो डिजीजेस वहां पर नेचुरली फाइंड की जाती हैं, जहां पे उनके प्लांट्स ने तो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, बट इंडिया में वो डिजीज नहीं है, राइट? सो वी हैव टू इंश्योर दैट वी डोंट गेट डिजीज फ्रूट्स, डिजीज सीडलिंग्स. एंड सब पे हम टेस्ट तो कर नहीं सकते, वी कांट टेस्ट एवरी सीडलिंग. सो व्हाट डू? वी पुट देम इन क्वारंटीन. And what is that quarantine time? 2 years. तो अगर आज मुझे एवोकाडो का प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट करना है, I will have to put it in quarantine for 2 years. This is a problem. If I put it in quarantine for 2 years, then how do I expect that the farmer who has tried to import it will get the remuneration? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया क्लीन प्लांट सेंटर्स. अब obviously I need to ensure that my planting material does not have any viruses, does not have any diseases, but I made clean plant centers so that I can reduce this time to 6 months. So clean plant centers are made with the idea of disease free and genuine planting matter मिल पाए, material होना चाहिए, sorry, planting material मिल पाए to farmers. If they are able to get this, they will be able to switch to horticulture easily. This is the idea of this scheme. क्या आइडिया है यहाँ पे? We will first have 9 world class clean plant centers जिससे हम import
टाइम कम कर पाए, हम क्वारंटीन टाइम कम कर पाए, और हम वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. देन we also need to certify this, so we will develop a certification framework on the basis of the Seeds Act, which planting materials are safe and which are not. And lastly, we will give infrastructure support to have large scale nurseries. Who will implement this? National Horticulture Board in association with Indian Council for Agricultural Research. Right? Benefits क्या होंगे? फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स हम दे सकते हैं, डिजीज नहीं होगी उनमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ recall the concept of One Health. If my plants are free of disease, if my environment is free of disease, even humans are free of disease. One Health का concept क्या था? That human health, animal health and environmental ecosystem health are linked. This mission or this clean plant program is also in sync with life mission, but life में आपको environment में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा. इंडिया में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर अभी है, this will tell you the problem. The amount of area of India that is cropped using horticulture, जहां पे horticulture crops हैं वो 13% है, but contribution to agriculture और gross value addition, अगर मैं GVA की contribution की बात करूं तो horticulture की 33% है. That means disproportionate amount of contribution is there because it is a very remunerative farming approach. इसमें जाने के लिए मैंने clean plant program launch किया. My idea is to have virus free high quality planting material to be given to all farmers regardless of socio-economic status and land holding size. अब ये points एक MCQ के लिए important होते हैं. This is what will generally mark wrong, and our aim is to become a leading global exporter. समझ आया clean plant program का logic? Is the logic clear? लॉजिक क्लियर कि कहां से बनी स्कीम, कैसे, क्यों बनाई है? गुड. दिस इज पार्ट ऑफ द 7 schemes बाय द कैबिनेट दिस ईयर. आगे देखते हैं. These are other schemes for horticulture. Do read them once. मैं इन स्कीम्स में डिटेल में नहीं जा रहा हूं. MIDH एंड चमन आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनको एक बार आपको रीड करना है, बट यस जस्ट रीड इट वंस, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. थर्ड स्कीम दैट द कैबिनेट हैज लॉन्च्ड दिस ईयर, लॉजिक आपको समझ आ जाएगा. क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. Climate change is a major problem as far as agriculture is concerned. Why? देखो, if we look at where the future of the world is going, we will have more and more population that's going to develop. So if urbanization in India is increasing, the same amount of land now has to feed more population, more urban population. एक तो ये challenge है. When we have unsustainable agricultural practices such as too much use of fertilizer, etc., it leads to climate change. When there is too much climate change is not global warming. Global warming is one component. Climate change is increase of extreme weather events. Extreme weather events means too much rainfall, too much heat, too much cold, too much drought, etc. बारिश होगी तो बहुत ज्यादा होगी, सूखा पड़ेगा तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, right? This will have an impact on agriculture. तो अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर विल गिव राइज टू क्लाइमेट चेंज इफ इट्स अनसस्टेनेबल, एंड क्लाइमेट चेंज विल मेक एग्रीकल्चर मोर एंड मोर अनसस्टेनेबल. सो देयर इज अ लिंकेज. सो वी नीड टू प्रैक्टिस समथिंग कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस न्यू स्कीम, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. हियर व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फार्मर्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस. अब अगर फार्मर्स को प्रिपेयर करना है फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस तो क्या करना होगा? रिसर्च एंड एजुकेशन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, एनहांसिंग पल्स एंड ऑयल सीड्स, ये दोनों ध्यान रखना, दोनों न्यूज में है, दोनों अभी डिस्कशन भी होगी दोनों पे. कमर्शियल क्रॉप्स डेवलप करेंगे, एक्सेट्रा. बेसिकली वी विल गो फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेल फार्मर्स व्हाट टू डू. राइट, क्लियर? फोर्थ स्कीम, पहली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, सेकंड क्लीन प्लांट प्रोग्राम, थर्ड इज दिस स्कीम क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. फोर्थ स्कीम strengthening agriculture education management and social sciences. समझ आ रहा है क्यों होगा ये? Right, we want to increase the level of agricultural research and development, make extension services better. उसके लिए है तो prepare agriculture students and researchers for current challenges. तो क्या करेंगे? डेटा यूज करेंगे, नए स्टूडेंट्स को बताएंगे this is how you need to research, etc. Logic behind the scheme is clear. अब
I want to shift farmers out of rice feed cereal system to other parts of production. One of that is animal husbandry. So I came up with sustainable livestock health and promotion scheme so that I can increase the income from livestock and dairying. Livestock में main problem क्या है? That livestock sometimes get lot of diseases. वो disease वाली problem solve करने के लिए I have come up with this scheme. Then research मुझे बढ़ानी है. Sixth scheme is strengthening कृषि विज्ञान केंद्र. अब कृषि विज्ञान केंद्र, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र को 50 years हो गए हैं since it was set up. It was first set up in 1974 in Puducherry in Tamil Nadu. Right? This was Dr. Mohan Singh Mehta committee that had set them up. That is why 50 years में जो चीजें होती हैं यूपीएससी का चांस भी ज्यादा होता है पूछने का. So very important for this year. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च देख लिया. उसमें किसान विज्ञान केंद्र का क्या काम है वो समझते हैं. It is a district level institution. It is actually the only district level institution we have for technological support in agriculture. We have institutions at national, state levels, regional level, etc. But for that particular local area, what things have to be developed, that is done at KVK. So it functions as knowledge and resource center, and it is a part of National Agricultural Research System. वो system कैसा था वो भी हमने देख लिया. All right. The seventh scheme, इस पे ज्यादा डिटेल नहीं आई है. Even if you research it, you will not find it. Government ने बस बताया है that will focus on natural resource management, water management, land management, etc. So the cabinet this year has come out with 7 new schemes on agriculture. 14,000 crores का outlay है. These are the 7 schemes. Logic should be clear now. अब ये PIB का आर्टिकल देखते हैं. श्री अमित शाह जी, who is Honorable Minister for Home Affairs and Honorable Minister for Cooperation, he has launched farmer welfare activities worth 300 crore during Diamond Jubilee celebration of one National Dairy Development Board and birth anniversary of Shri Tribhuvan Patel. अब यहाँ पर क्या है? We are again focusing on the idea of having farmers go away from cereal rice feed system to the system of dairying, to the system of livestock management. ठीक है? तो क्या announcements हैं? That okay, some farmer welfare schemes are there. Dairy and fruit vegetable processing unit is there. Badri ghee and Gir ghee have been launched. इन चीजों पे questions generally कम आते हैं. You will read them once. जब मैं आपको बताऊंगा कि ये important है, इस पे question आ सकता है. That is what we'll focus on. This you should know. Broadly you should know. क्योंकि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है. राइट? तो यहाँ पर क्या है? इट वाज लॉन्च्ड इन 1965 बाय डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन. दे participated in Operation Flood. Operation Flood was basically the institutionalization of the cooperative of Amul. Amul today, जब आप when we were in Lavasna, they took us to Gujarat to see Amul's plants. Amul के जो plants हैं, they are the largest in Asia at the moment. They are the largest conglomerate which is dairy producing in Asia at the moment. So of course Amul is doing very well, and even the members of Amul are getting a lot of remunerative produce out of their dairy production. But एक तो हाँ, आपको एक homework दिया था to read cooperatives. I hope आपने वो पढ़ लिया है. It's also important this year because this is in news. Now we are thinking that we will have this Operation Flood. White Revolution was India's idea of boosting its dairy production. Now we are thinking of White Revolution 2.0. We are trying to increase the milk procurement by 50%. Again, the idea of diversification, expanding the role of dairy cooperatives. Right? इसको implement करने के लिए we have National Program for Dairy Development. Right? Again, the idea will be simple. We'll give financial assistance. We'll want farmers to shift to dairy. We'll want farmers to build cooperatives, etc. Same idea. Again, for cooperatives, we have launched an initiative called Cooperation Among Cooperatives Initiative. Right? This was again piloted in Gujarat, where Amul is, and we are trying to now scale this nationwide. क्या करना चाह रहे हैं? Free cash credit देना चाह रहे हैं through Kisan credit cards, micro ATMs to dairy cooperatives, and increase their banking access and increase their market access. Right? Now, these are other initiatives in the dairy sector. Again, एक बार read करने. There are too many, but you will see that most of them, Animal Disease Control Program, Livestock Mission, Rashtriya Gokul Mission, these are all built
with the idea of having a better indigenous breeds and two trying to control diseases there, right? अब हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखो. दिस इज द एड्रेस ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. यू नो, एवरी ईयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल गिव एन एड्रेस टू पार्लियामेंट. उस एड्रेस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या था, इन चीजों पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं. सो इवन अदरवाइज आई वुड रेकमेंड दैट दिस डॉक्यूमेंट, द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हर स्पीच इज अवेलेबल. दिस डॉक्यूमेंट यू शुड रीड आइडली. वैसे भी है ना, पढ़ लेते हैं क्या क्या मेंशन हुआ. सबसे पहले ये बोला कि 332 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर प्रोड्यूस्ड दिस ईयर. रिकॉर्ड प्रोडक्शन वाज देयर. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस. स्पाइसेस भी न्यूज में इसकी बात करेंगे, पल्सेस भी न्यूज में इसकी भी बात करेंगे. Government has consistently increased MSP for both Kharif and Rabi crops, so MSP is also in the news. Over the decade, spending on the procurement of rice, wheat, pulses, oilseeds and coarse grains has tripled. तो coarse grains या millets भी न्यूज में है, उसकी भी बात करेंगे. 109 climate resilient bio-fortified high-yielding advanced crop varieties have been released to farmers. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज बीन लॉन्च्ड, ये भी न्यूज में, इसकी भी बात करेंगे. ऑयल सीड प्रोडक्शन, अ नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स हैज बीन अप्रूव्ड, ये भी न्यूज में, इसकी भी बात करेंगे. नेशनल मिशन इज आल्सो बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर नेचुरल फार्मिंग. सी, व्हेंस वी रीड दिस एड्रेस, इट टेल्स अस व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट, थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें बात करेंगे. नेचुरल फार्मिंग इज द ओनली थिंग वी विल स्टडी इन एनवायरनमेंट. हम उसे एनवायरनमेंट में यूट्रोफिकेशन फर्टिलाइजर्स के साथ पढ़ेंगे. नाउ फर्टिलाइजर्स भी हमने देखा था. फर्टिलाइजर्स में assuring the availability of DAP, डायअमोनियम फॉस्फेट, दिस हैज बीन फोकस ऑन. नैनो डैप भी बनाया इस बार, तो ये भी न्यूज में है. ठीक है. अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाज इन द न्यूज. तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्या रोल है और यहां पर क्या होता है वो देखते हैं. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, राइट? नाउ Who is going to invest in agriculture? या अभी एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम है कि कौन इन्वेस्ट करेगा? फॉर इन्वेस्टमेंट, फार्मर नीड्स मार्केटेबल सरप्लस. He needs to have enough surplus that, let's say he has produced 1000 kg of wheat. He should be able to get enough money that he has settled his own previous loans, settled his expenses of consumption of his family, settled his saving expenses. Some of the money he will save also. Then he should have some surplus. That surplus he will reinvest in the farm for it to grow further and develop infrastructure. अब ये चीज तो है नहीं, because farmers income has not increased to that level. Agriculture has remained non-remunerative in the country. So we need government to set up a fund to invest in agricultural infrastructure. So we have a central sector scheme, complete investment by central government in agricultural infrastructure. We will do long-term debt financing for setting up post-harvest management infrastructure and community farming assets. Post-harvest management is that, okay, you have done the harvest, you need cold chain storage, warehousing, etc., etc., right? Corpus is of 1 lakh crore, and we will have this interest subvention scheme. Interest subvention is like we read in Kisan credit cards कि अगर आप regular repay कर रहे हो तो we will give you 5% subvention, otherwise we'll give you 2% subvention. Government will bear the interest cost if you take debt from this fund. Corpus is of 1 lakh crore and even credit guarantee will be offered. Pehle this was being done by CGT-MSE. CGT-MSE is Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises. Now it has been shifted to NABARD. So now NABARD is doing it. ठीक है, न्यूज में है ये. अच्छा, second thing here was community farming assets. So idea here is that you can develop infrastructure for community farming assets where everyone will be benefiting from it. The entire community will be benefiting from it. It is also linked to PM Kusum. PM Kusum is what scheme? The scheme where we are asking farmers to, plant or have solar panels in their farms. Solar panel क्यों बनवा रहे हैं हम farms में? If farmers have to use electricity, generally we see, ये मैंने budget वाली class में भी पढ़ाया था. Generally, the problem of discoms in India is that agricultural power is free. If agricultural power is free, it has to be extremely subsidized.
if it has to be extremely subsidized or it's free, discoms then don't get money from the state government. Then discoms are unable to distribute power even to urban areas, and despite being a power surplus country, we are experiencing power cuts. Power cut is the reason why this class started 30 minutes late. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? Let us put solar panels in the farms. If solar panels are there in farms A, farmer will be able to get their own electricity consumption or their own power they will be able to generate. They can even sell this power to discoms and get remunerative incomes, right? And the subsidy that has to be given to agriculture power will reduce. This is the idea here. Production, when we look at production, there are certain things that government is focusing on this year. Government is saying that we should get out of the system of rice wheat farming, and we should ask farmers to produce things that are remunerative. So examples here are, we are asking them to focus on edible oils, things that we import. We are asking them to focus on horticulture, fruits and vegetables. We are asking them to focus on pulses. We are asking them to focus on other areas such as animal husbandry, spices, etc. ये सारी चीजें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, ऑल ऑफ देम आर इन द न्यूज. ठीक है, ये सारी चीजें न्यूज में हैं. तो अब हम एडिबल ऑयल पढ़ते हैं. यहां स्टार्ट करेंगे. आई होप टिल नाउ थिंग्स आर क्लियर, द लॉजिक इज क्लियर ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. आई नो वी हैव टू मूव अ लिटिल बिट क्विकली बिकॉज इसमें मेरे लिए समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, राइट? सो आई विल नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग क्लास. आई विल गिव यू टाइम टू रीड बाय योरसेल्फ आल्सो, बट आई होप द लॉजिक ऑफ एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू. एडिबल ऑयल की बात करते हैं. एडिबल ऑयल क्या है? जो हम वी यूज दिस ऑयल फॉर कुकिंग. हम घी यूज करते हैं, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए. दीज आर एडिबल ऑयल्स, राइट? सो दे आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्रॉप्स. प्राइमरी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट प्रोड्यूस एडिबल ऑयल देमसेल्फ, जैसे कि रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम. Secondary crops are those that are not directly producing edible oils, but from them edible oils can be extracted. जैसे कि राइस ब्रान ऑयल आपने सुना होगा, बहुत ही हेल्दी होता है. कॉटन सीड ऑयल, ट्री बॉर्न ऑयल्स, दीज आर सेकेंडरी क्रॉप्स. करंट स्टेटस क्या है? करंटली वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड. अब व्हाई डू यू थिंक दिस इज? चलो आपसे पूछते हैं, आपको क्यों लग रहा है हम लार्जेस्ट इंपोर्टर क्यों हैं? I want to ask you this because ये थोड़ा सा weird reason है which you will not anticipate. क्या प्रॉब्लम होगी? हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे? Why are we importing edible oil so much? आपका सोचना सही है कि यार एमएसपी होगा तो बाकी क्रॉप्स पे एमएसपी मिलता है, राइस व्हीट पे एमएसपी मिलता है. डू वी गेट एमएसपी फॉर दिस क्रॉप? यस और नो? इस क्रॉप पे एमएसपी मिलता है क्या? आप लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन सोच रहे हो, बट इस क्रॉप पे एमएसपी मिलता है क्या? नहीं, दिस ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर ग्रुप्स. अरे मिलता है यार, नो मत बोलो, मिलता है इस क्रॉप के लिए एमएसपी. गुड, मोस्ट ऑफ यू नो, दैट्स गुड. अब एक बात बताता हूं आपको. प्रॉब्लम हियर, इस पे आएंगे मिशन पे. प्रॉब्लम हियर इज नॉट ऑफ लैक ऑफ कवरेज और लैक ऑफ एरिया, राइट? वी edible oils are our second largest crop category after cereals. राइस, व्हीट, इन सब के बाद सबसे ज्यादा ग्रोन इंडिया में edible oils है. प्रॉब्लम इज ऑफ लो यील्ड. एक प्रॉब्लम ये है कि यील्ड ही नहीं है. डिस्पाइट हैविंग सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप एरिया अंडर एडिबल ऑयल्स, वी स्टिल आर मेजर इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल. ठीक है, इट इज रेन फेड फार्मिंग.
and it is concentrated only in certain specific regions. ये challenges हैं. अब again I just want you to understand कि schemes बनाई कैसे जाती हैं. Now you know the challenge. Challenge क्या है कि हम import करते हैं and yield is low. चलो रेनफेड है, इसके लिए तो हमने इरिगेशन की स्कीम्स पढ़ ली हैं. एडिबल ऑयल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन एरियाज. कुछ ही एरियाज में एडिबल ऑयल्स ग्रो हो रहे हैं कंट्री में, बट वहां पर बहुत ज्यादा हो रहे हैं. नाउ इफ यू हैड टू डिजाइन अ स्कीम, व्हाट आर द टू मेजर थिंग्स दैट यू विल डू? व्हाट विल बी योर टारगेट? कि यार प्रोडक्शन बढ़ाओ, एक्सट्रैक्शन बढ़ाओ और एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ाओ. अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाओ, राइट? प्रोड्यूस मोर एंड एक्सट्रैक्ट मोर. दैट विल बी योर टारगेट. Now, knowing that low yield is the biggest problem and the fact that it is concentrated in specific regions, what sort of intervention would you like to do? आप क्या करना चाहोगे? Seed development, high yielding variety of seed, right? क्योंकि लैंड को तो आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, आप सीड को चेंज कर सकते हो. तो एग्जैक्टली वही स्कीम है. वी हैव अ सीड इन्वेंट्री, ट्रेसेबिलिटी एंड seed. One word is wrong here, cannot be inventory twice. I'll check this. Seed, I think it's innovation or something. I'll correct this. Seed innovation, traceability and holistic inventory portal called Sathi portal. अब ये कैसे बना ये आप ही देखना. What have we done here? We will have a 5-year online seed rolling plan. Rolling seed plan क्या होता है ये हम देख चुके हैं when we were reading about दलवाई कमिटी. तो rolling seed plan हम बनाएंगे and we will ask the states to tie up with seed producing agencies ताकि वो अपने farmers को better quality seeds provide कर सकें. What can be the second reason of not having good yield? You might have good seeds, but if you don't know what good agricultural practices are, कौन सा fertilizer, कितना water देना है, कब harvest करना है, etc., you will still have low yield. तो उसके लिए we will develop value chain clusters. And why can we develop value chain clusters? Because it is concentrated in certain regions. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? Give access to seeds and give information about good agriculture practices, advisory services, so that with regards to, let's say, weather uncertainty or pest problems, farmers know how to handle it and ultimately yield increases. This is the idea of National Mission on Edible Oils. न्यूज में भी था, it was in the honorable president's address also. So National Mission on Edible Oils, oil seeds was launched. इसके ऊपर के components मैंने आपको बताए हैं. We have another national mission called National Mission on Edible Oils, oil seed and oil palm. Same type of targets are there. We have a specific mission called National Mission on Edible Oils, oil palm, because palm oil was our greatest import. We are largest importer. Largest importer में भी जो सबसे ज्यादा हम import करते हैं वो palm oil है, फिर सोयाबीन ऑयल है. तो palm oil का जो मिशन हमने बनाया उसमें हमने क्या सोचा? That we will expand oil palm cultivation. And where will we expand it? In northeastern states, where already diversity is high. So northeastern states, Andaman and Nicobar Islands पे focus करेंगे, right? And this is called yellow revolution in agriculture. White revolution was for milk. This is yellow revolution. So again, same idea is carrying forward. न्यूज में भी था, तो ये important news है. इस पर क्वेश्चन आ चुका है, आ भी चुका है इस पे क्वेश्चन ऑयल पाम पे पहले. अब now let's come now to millets. चलो, you have 2 minutes now. Tell me, what are the advantages of millets? अगर आपने राइट स्मार्ट या GS3 किया है मेरे साथ तो ढंग का आंसर देना, बिकॉज स्टेक होल्डर अप्रोच से पढ़ा चुका हूं. बताओ, 2 मिनट है सोचने के लिए. चैट में लिख सकते हो, चैट को मैं प्राइवेट कर रहा हूं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मिलेट्स? बताओ. अच्छा, सीध ऑथेंटिकेशन है. थैंक यू प्रतीक.
यार एक एक वर्ड क्यों लिख रहे हो चैट में? राइट, फार्मर्स को क्या एडवांटेज? निहारिका, गुड आंसर। फार्मर्स को एडवांटेज, गवर्नमेंट को एडवांटेज एंड एनवायरमेंट को एडवांटेज। और कंज्यूमर्स को भी एडवांटेज ऑफ कोर्स। ऑल राइट, देखो, why did I ask you this question? Exact question came in मेंस 2024। सेम क्वेश्चन आया मेंस 2024 में, तो इस बार प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है। मिलेट्स आर नोन एज श्री अन्ना। यहां मैंने एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। इवन इफ यू कुड आइडेंटिफाई 3 स्टेक होल्डर्स, एटलीस्ट ये 3 आपको लिखने चाहिए, कंज्यूमर्स को, एनवायरमेंट और फार्मर्स को, और इकोनॉमी को क्या एडवांटेज है, राइट, बिकॉज ऑफ मिलेट्स। रीड दिस। यहाँ पे सीलिएक डिजीज एक चीज है, वो मैं आपको बता दूंगा, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर ये प्रीलिम्स में आया तो किस टाइप से आएगा। पहले तो वी कैन आस्क अबाउट इंडिया स्टेटस। तो इंडिया प्रोड्यूसेस 80% ऑफ एशियाज मिलेट्स एंड 20% ऑफ द global production. So definitely we are the largest producer of millets. We are top 5 exporter also, right? The main states are Rajasthan, Karnataka, UP and Haryana. This is something I want you to remember. आएगा तो क्वेश्चन पे आने के काफी चांसेस हैं। that millets are classified into major millets, minor millets and pseudo millets, right? So major millets are sorghum, pearl millet, finger millet. Minor millets are kakum, kodon, sanwa, kukti and proso millet. And amarnath or buckwheat, these are amaranth actually, amaranth and buckwheat, these are pseudo millets. तो ये एक बार पढ़ लेना, this table is important. अब यहाँ पर challenges क्या हैं? What are the challenges of millets? Low yield, consumer preferences अभी उतनी high नहीं है, shelf life is short, और MSP based system है, तो लोग cereal rice feed grow करने में ज्यादा interested है, right? If question comes in prelims, it will either come from this table or it will come from these initiatives. तो जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे फोकस है ऑन मिलेट्स। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में वी आर थिंकिंग दैट वंस अ वीक वी विल गिव मिलेट्स टू इन द सप्लाई दैट वी गिव हियर। एंड देयर इज अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम हम देखेंगे आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास फॉर स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दैट आर मिलेट बेस्ड, वी विल गिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो देखो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, एक हम कह रहे हैं कि इनकी प्रोडक्शन बढ़ाओ, यहां हम बोल रहे हैं कि इनकी डिमांड भी बढ़ाओ। एंड इवन यू विल सी दैट वी ऑर्गेनाइज्ड अ मिलेट्स लंच इन द यूनाइटेड नेशंस व्हेन वी वर गोइंग आउट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। हमारा टेन्योर लास्ट ईयर खत्म हुआ था 2 इयर्स का, तो हमने वहां पर एक मिलेट्स लंच भी कराया था। सो ग्लोबली आल्सो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस। वी हैड अ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट? सो this is our idea that we need to increase millet production, right? अब spices were also in the news, right? Spices का status क्या है? We are the largest exporter, largest producer and largest consumer of spices. Very interesting story about spices, आपको बताता हूँ। India was largest producer of spices. India has been for a very long time. Even Southeast Asia, lot of spices are produced. वर्ल्ड में स्पाइसेस की बहुत डिमांड थी, राइट? एंड चलो आई विल एक्सप्लेन दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज अ स्टोरी अबाउट इनोवेशन, राइट? तो इंडिया में थी डिमांड, इंडिया में प्रोडक्शन थी और साउथ ईस्ट एशिया में प्रोडक्शन थी। लॉट ऑफ कोलोनाइजेशन हैज आल्सो हैपेंड सो दैट स्पाइसेस कुड बी exported to Europe and you know those countries that used to go through the Arab world and then go to Europe. ये आपने पढ़ा होगा पक्का। Once a particular technology was discovered, तो यहाँ पर स्पाइस प्रोड्यूस हो रहा था, स्पाइसेस वर बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर,
and they were going to Europe. After the discovery of one particular technology, this spice export collapsed. आज भी होता है, ऐसा नहीं है. But the importance or the prices of spices in the European markets crashed after one particular technology was discovered. Can you guess which technology it was? आप guess कर सकते हो कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो? Good. Refrigeration. अरे वाह यार, that's great that you guys know this. It was when refrigeration was discovered, when a fridge was made. यहाँ पर spices का price crash कर गया. Why? Because people could not store food. जब तक fridge नहीं था, आप food को store नहीं कर सकते थे. Spices were actually being put into food to make food that was slightly rotten more tasty. That is why these spices were being taken to Europe. The moment a refrigerator was discovered, you could store food for longer. When you could store food for longer, you did not need spices in your, your food palette, and therefore the prices crashed. With this story, we'll just take a break for 2 minutes and continue from here. All right. चलो स्पाइसेस में इंटरवेंशन देखते हैं. स्पाइसेस में वी हैव अ न्यू स्कीम कॉल्ड स्पाइस्ड स्कीम. स्पाइस स्कीम इज sustainability in spice sector through progress, innovative, collaborative interventions for export development.
ये काम बढ़िया करते हैं, no doubt about it. Like this also requires a lot of innovation, and at least this innovation is happening very well. Anyway, so this scheme is actually focusing on cardamom. Cardamom is in news. Cardamom के बारे में हम और देखेंगे, types of cardamom etc. Short cardamom, long cardamom, it is in the news, but we'll see it in environment when we see species. The other spice that is in news is turmeric. Even spices board is in news, तो वो देख लेते हैं. Now, status of spices is again largest exporter, producer, and consumer. Chili, cumin, turmeric, ginger, and coriander. These are the main spices we produced. Cardamom is not there. Cardamom पे अब focus है कि cardamom को हम will increase its production also, right? We are majorly exporting to China and US at the moment. Spices board is there for promotion of export of spices. ऐसा ही एक बोर्ड इस साल की बजट में बना था. Can you recall and tell me which board it was? इस साल की बजट में there was some board that is formed. कौन सा बोर्ड था, किसी को याद है? मखाना बोर्ड. गुड, मखाना बोर्ड. गुड. नाउ Spices Board is made under Spices Board Act of 1956 and it is the secretariat for the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs. ये कोडेक्स कमिटी किसका पार्ट होगी, ये सोच सकते हो? कोडेक्स वर्ड यहां पर आया है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने कोडेक्स पहले? आई हैव ओनली टॉट यू दिस रिसेंटली ओनली. किसका पार्ट होगा ये? नहीं यार, एफएओ का पार्ट नहीं होगा. वेट, ये अब गलती हो रही है. This Codex Committee is a part of Codex Alimentarius Commission. Codex Alimentarius Commission gives recommendations that the FAO accepts. The recommendation that FAO accepts then become part of sanitary and phytosanitary measures. This is one of the committees of Codex Alimentarius Commission. Okay, it's not a committee in FAO. I hope this is clear. It is a part of Codex Alimentarius Commission. Codex Alimentarius Commission will give recommendations to FAO. FAO will accept these recommendations. It will go to Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement under WTO. Pulses bhi news mein hai, like we saw. We are the largest producer of pulses, largest consumer of pulses, and still largest importer of pulses. You have seen in the Honorable President's speech that we are largest producer, but because of lack of diversification and huge demand in India, we are still importing pulses. So major pulses ये हैं जो India grow करता है. Do read them. Beans are considered minor pulses. What is the major? I don't think you can see. तो देख लिया होगा आपने. I was asking what is the major environmental advantage of producing pulses, that they can help in nitrogen fixation. They are leguminous plants. 40% production in India is gram production. So this is the major pulse that is being grown. They are protein rich, they are less water intensive, etc. Pulses were also mentioned in the Honorable President's speech. So we are just reading here also. And again, in the National Food Security Mission and in the Crop Diversification Program, we are focusing on pulses. Again, naam se hi clear hai. We are trying to diversify from rice wheat system. This is one scheme that we have read. Actually, we have read this thing. Last time we had read that अगर आपको MSP provide कराना है, तो there are 3 ways of doing it. Either you do direct procurement, कि आप directly MSP पे खरीद लो. दूसरा is you do price deficiency payment scheme, or you can do ask private people to buy at MSP on your behalf. So this is price deficiency payment and this is private procurement and stockist scheme. We also have price support scheme. When market prices fall below MSP, so central agencies will directly procure at MSP. This was earlier limited only to wheat and rice. Now it is extended to pulses, oilseeds and copra. तभी आपने ऊपर देखा होगा कि cereals, pulses और oilseeds को specially Honorable President ने mention किया था in her speech with regards to procurement. Now all of these 3 pillars, either I will procure directly, or I will give price deficiency payment, or I will ask private people to procure on my behalf, are part of this scheme called PM Asha, which is Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshana Yojana. 100% centrally funded, so it is a central sector scheme.
These are two schemes in agricultural transport. Again, just read them. It's Krishi Udan and Krishi Rail. Udan is a scheme of airports. हम infrastructure में देखेंगे. And rail, of course, is also clear. एक बार इनको read कर देना. Nothing too much to understand here. आगे चलते हैं. अब we had read about PDS, है ना? Public distribution system we had read that okay, FCI will procure and then there will be PDS, etc. Other than the challenge of one is challenge of fake beneficiaries or the challenge of inclusion and exclusion errors. What is the biggest challenge facing the PDS system? PDS में क्या सबसे बड़ा challenge होगा आपको लगता है? Let me see क्या लिख रहे हो आप. Good मयूर. नहीं, inclusion exclusion error तो लिख लिया ना. Leakages is the challenge. आपने दिया है फूड फॉर पीडीएस बट इट इज लीकिंग, इट इज गोइंग इनटू ब्लैक मार्केटिंग, या आपको पीडीएस का खाना वहां से निकाल के वहां का राइस वीट निकाल के कोई प्राइवेट बंदा अपनी शॉप पे बेच रहा है, कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कोई होर्डिंग कर रहा है. लीकेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. Now to solve this problem of leakage, government has come up with a new tool. This is Anchakra tool. So there is Anchakra tool, which is for supply chain optimization tool in public distribution system. And we also have Scan portal, subsidy claim application for NFSA portal. NFSA is National Food Security Act, पढ़ चुके हैं, right? Now the idea here is we have advanced algorithms so that we see what are the optimal routes to ensure that when the movement of food grains is happening, there is no leakage that's happening. That is the Anchakra tool, ताकि leakage जो है उसको हम रोक सकें. Now, again from farmer to fair price shop, the entire supply chain is covered ताकि diversion ना हो सके. 4.37 lakh fair price shops are covered. It is going to be integrated with Gati Shakti, ULIP, etc., etc. Gati Shakti क्या है, ULIP क्या है, we'll see. Then there is the Scan portal, subsidy claim approach for NFSA. So it is a single window portal where people who are getting subsidies under National Food Security Act, they can claim these subsidies. So basically हम PDS को ज़्यादा efficient बनाने की कोशिश कर रहे हैं. That is what was in the news. अब बात करते हैं. We have seen inputs, we have broadly seen production. Production में एक दो चीजें और हैं. When production happens, we know it can go into three things, right? One is it can go into government procurement and then go for the PDS system. One is it can be procured privately. Some of what is procured privately will also go to food processing industries. This also we'll see soon. A lot of it is also going into agricultural export. अब आप बताओ, again I'll give you 1 minute to think about this. What are the main challenges of agricultural export in India? 1 minute है, chat में private कर रहा हूँ. Agriculture export के क्या challenges हैं इंडिया में? Think about it and tell me. Oh, I think I've left the mouse there. Sorry. अब चलो, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं. When I asked you to think of this कि एक्सपोर्ट के क्या चैलेंजेस हैं, always think of this
from a particular supply chain method. यार अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होना है तो देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस इन इनपुट्स, उसके बाद इन प्रोडक्शन, उसके बाद इन पोस्ट प्रोडक्शन, है ना. पहली चीज है यहां पर, व्हाट आर यू ग्रोइंग. यू शुड ग्रो व्हाट द वर्ल्ड वांट्स टू ईट, ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सपोर्ट. तो आपको अवेयरनेस तो हो कि आपको क्या ग्रो करना है. वी आर स्टक इन लो एंड ऑफ वैल्यू चेन, दैट इज द प्रोडक्शन लेवल प्रॉब्लम. वी आर एक्सपोर्टिंग एप्पल्स नॉट जैम, वी आर एक्सपोर्टिंग पोटैटोज नॉट चिप्स, राइट. तो फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा इन द प्रोडक्शन लेवल, दीज आर द चैलेंजेस. फिर अगर हम इससे और आगे जाएं, there is obviously an issue of sanitary and phytosanitary measures here. There is also a lack of diversification. Not only a lack of diversification in what we are exporting, there is also a lack of diversification in where we are exporting it, right? So all of these things need to be sorted out. But iske alawa, there is one more major challenge that you have not mentioned yet. I'll give you 10 seconds more. One major challenge after this process, things are ready to export, बट स्टिल वन चैलेंज कम्स. क्या चैलेंज है वो जिसके लिए नई पॉलिसी आई है? रेडी हैं चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर भी हम नहीं कर पा रहे. अरे नहीं यार, इट्स नॉट ट्रांसपोर्ट. चलो ट्रांसपोर्ट भी रेडी है, ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो रेडी. आई वॉन्ट यू टू कम अप विद द आंसर. Good. What's the name? Anjane Vaishnav. Government has frequently banned export of lot of agricultural products. Why? To maintain enough supply in the domestic market. याद करो एग्रीकल्चर पीस क्लॉज. We can even put export bans. याद है वो पढ़ा था वहां पे. Not only on imports but also on exports it's there, that we can, pending normalization of our food security problem, we put either some conditions on imports, some conditions on subsidies, some condition on exports. Government के export bans देखो, we'll come to this, इस पे भी आते हैं. Look at this. Wheat ban in May 2022, sugar restrictions in June, non-basmati rice export ban in July, parboiled rice duty export duty imposed in August, basmati minimum export price was set, onion export ban was lifted, but again 40% duty. Government puts export ban. Why? Because of food inflation concerns. We have concerns with regards to food inflation. So to ensure enough supply in the domestic markets, we ban export. This again leads to non-remunerative, farming in the country. So what do we need now? We need a farmer-friendly export policy, right? So that, यहाँ पे देखो क्या लिखा है सबटाइटल में, the current government policy has a consumer bias. When we feel prices are going to rise, we will put export ban. This precludes the farmer for getting enough remuneration for their production. This is the idea. तो ये है हमारी export की condition. The top export that we are doing at the moment, rice, and we are the largest exporters of rice, then marine products, then spices, then meat, then sugar. Bovine meat means cow meat, cow and buffalo, etc., etc. This is what we're exporting. And export performance, there has been an 8% decline from last year, right? अब imports अगर हम देखें तो vegetable oil का सबसे ज्यादा है, फिर pulses, फिर fruits vegetables का है. अब this is share with regards to the world. 2.4% of the exports is what India export of the total world agricultural export, and import is 1.9%. हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक नई एक्सपोर्ट पॉलिसी जहां पर रीबैलेंसिंग हो, राइट? फ्रॉम अ पॉलिसी दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन प्राइस एंड सप्लाई कंट्रोल, वी नीड टू focus on a policy that is mainly based on productivity based competitiveness. If our productivity is high and we can get remunerative prices from the world, we should export, right? So our whole idea of buffer stock management, procurement for domestic needs and export needs to be rebalanced. This is what was written in that article. अब आपको ये चीज तो मेंस में पूछी जाएगी. What will be asked is this data you have to remember, because इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं. I'll show you. Now, what are the main government schemes for export?
One is TIE scheme, Trade Infrastructure for Export scheme. The job is to build infrastructure that would help farmers export. Market Access Initiative, again promote export access and market access for farmers. And lastly, Transport and Marketing Assistance. These are the three most important ones जो अभी न्यूज में है. बाकी स्कीम्स भी आई हैव रिटन हियर, यहां पर बाकी स्कीम्स भी लिखी हैं. जस्ट रीड दीज वंस. इसमें वन इज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज एनपीओपी, but NPOP and participatory guarantee scheme we will read in environment when we this is related to organic farming, as you can see. Organic farming, and this is what we'll read with when we read environment. We also had an agriculture export policy of 2018, but we have missed the targets here. For example, 2022 में हमारा export target था 60 billion, what we exported was 55 billion, and in the next year it reduced by 8%. The other few things that are in the news, National Turmeric Board has also been announced this year, right? Makhana Board was also announced. Turmeric Board has also been announced. काम क्या होगा? एक तो all these boards, all such boards are under the Ministry of Commerce. Main job of these boards is to promote export, right? इनमें आपको क्या याद करना होता है? Most of these boards are statutory bodies. यहाँ पर ये specifically क्यों लिखा गया है या मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? It is not a statutory body. Turmeric board is not statutory body. Spices board is statutory body, right? This is made through an executive order. तो executive body है और आपको headquarters याद रखने होते हैं, right? These are the ones where the questions come. इसके अलावा not a lot to read here. This is about turmeric. I expect you'll read again some GI tagged varieties. Again something that I don't think I have to teach you. I will give you time today to read it also. Another thing that was in the news was coffee. Our coffee exports have increased a lot, right? So our coffee exports have actually crossed 1 billion for the first time. अब यहाँ पर एक तो main reason है that global coffee consumption has increased, and mainly Brazil and Vietnam. These are the countries that export coffee, but यहाँ पर there have been poor weather conditions. दूसरा is there is EU deforestation regulation. This we'll see in detail also when we are looking at carbon border adjustment mechanism, right? इन्होंने बोला है EU has come up with these very ridiculously stupid ideas of deforestation regulation or carbon border adjustment mechanism. I'll explain to you in environment why these are stupid. What they are saying here is that the entire value chain of production of coffee should be deforestation free, and only then we will take export. Now, question to you is this policy violative of any WTO principle? WTO के किसी प्रिंसिपल को ये वायलेट कर रहे हैं क्या? Yes or no? और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? Why is this not violating most favored nation status? Good, because there is an exception with regards to environment. Environment के अलावा और कौन-कौन सी exceptions हैं? What are the other exceptions that are allowed for MFN? Labor laws, good. What else? Environment, labor, free trade agreement, regional trade agreement, yes. LDCs. No, anti-dumping is not with reference to MFN. National security is with regards to MFN. Because of national security exemption, with regards to national security, we have revoked MFN status from Pakistan. Why has Pakistan not given India MFN status? Because their entire parliament, and for a fact, their entire parliament could not understand what MFN means. जो आपको समझ आ गया है, what I can see. तो actual story बता रहा हूँ आपको. The Pakistani government, I think it was Nawaz Sharif or somebody else, rather than MFN just means non-discriminatory trade partner, right? Everybody is most favored. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बार ट्राई किया, जब किसी को समझ नहीं आया तो नवाज शरीफ को समझ आ गया होगा. तो नवाज शरीफ ने एक बार ट्राई किया that we will give India non-discriminatory trade partner status. Even that their parliament did not accept. How can we not discriminate against India? Anyway, that is their level of intellect.
anyway. Now these are some growing conditions for coffee. Again, I expect you will read by yourself क्योंकि मेरे पास कुछ समझाने को नहीं है तो मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ. Similarly, rubber was in the news. Rubber में we read something when we were reading science and tech. We read something called GM rubber. What is the special thing about GM rubber? और यार तुम लोगों को सब कुछ तो आता है यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो प्रीलिम्स की? You remember so almost all the things so well. What is the gene? GM आसाम में ग्रो कर रहे हैं, that's true, but इसमें क्या? Very good. MnSOD, manganese superoxide dismutase. Cold tolerant rubber, good. We can grow this in cold, good. सब तो याद है यार, ऐसे ही आधा घंटा लगा दिया टेंशन कितने, but I think that was important. And do that exercise tomorrow. Again, this is about rubber board. Do read it. Nothing for me to explain. We'll come to now what I actually have to explain. What I actually have to explain is this. Sectors of the economy. Sectors of the economy, how they are classified. We know agriculture is primary sector, but ये primary, secondary और tertiary sector की classification कैसे होती है? Firstly, there is primary sector. So this is we have broadly covered all of the news of agriculture. I am trying to make a compendium of some other important schemes that are not in the news this year, जो इस बार news में नहीं है, but I think they are important. I will not put more than 20 schemes there, right? 20 से भी कम ही होंगी. जो कुछ important schemes हैं उनको एक जगह पे लिख के I will give to you. उनको एक बार read कर लेना. Again, don't need to go into its detail. देखो यार, जितनी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, फिर हमने कुछ स्कीम्स पढ़ी. Mostly questions come from concepts. 1 or 2 times question can come from schemes, so उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस देना. Right, and nothing for me to explain here also beyond a point. Now, sectors of the economy, this we have to understand. We know agriculture is primary sector, but how are they classified? Primary economies are those, primary economies की बात हो रही है, not primary sector. Sectors पे आएंगे. Primary economies are generally those economies that are early economies with low technology. Then we have secondary economies that are focusing on industrialization and tertiary economies that have urbanization and automation. यहां से ये क्लासिफिकेशन शुरू हुई थी on primary economy, secondary economy, tertiary economy. Then we came to primary sector of the economy, secondary sector of the economy, tertiary sector of the economy. तो इसकी कहानी क्या है? देखो, first is primary sector. Primary sector of the economy. Primary sector of the economy is things that are directly, we are taking something from nature and producing. For example, agriculture, we are directly producing from nature. Mining, we are directly producing from nature. This is primary sector. So, extraction and production of raw materials. So, agriculture, fishing, forestry, mining, these are primary sector economic activities. They are foundation of all other economic activities, and generally they are labor intensive. Secondary sector. Secondary sector is we will take the output from primary sector. तो primary sector का output लेके इसका जो output है in the secondary sector, we will then provide some finished goods. So mainly manufacturing, right? So automobile, textile production, aerospace, shipbuilding, energy utilities, everything where, let's say, mining is primary sector. From mining, you got some minerals. I use those minerals to provide a finished good. That would be secondary sector. Tertiary sector is we give services, provision of services instead of end products. We do not provide end products or finished goods here. In tertiary sector, we are giving either services
or a better word here would be we are giving intangible goods. Now sometimes there might be a confusion whether the output प्राइमरी तो क्लियर है कि नेचर से डायरेक्टली प्रोड्यूस किया है. अब जो आपका आउटपुट है देयर समटाइम्स कैन बी अ कंफ्यूजन whether it is a finished good, whether it is tangible good or it is intangible good. In case there is a confusion between these tangible and intangible goods, we have a classification by UN International Standard Industrial Classification, and this tells you whether your end product is tangible or intangible in case there is a confusion. Otherwise it's fairly clear. Ab services sectors के सब sectors were defined by the Economic Survey of 23-24. उन्होंने क्या बोला? ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, नॉट लैंड, रियल एस्टेट सर्विसेज, ownership of dwellings, professional services, public administration and other services. Just for you to tell you कि if there is a confusion, this is how it's classified. Generally there is no confusion, right? Now, अब अगर हम इकोनॉमी में देखें, we have actually finished our discussion on agriculture. Now what we are left with is a discussion on secondary and tertiary sector, basically on industry and services and little bit on infrastructure. From these topics in the prelims, in the last 10 years there have been 4 questions, total 4. Couple of things are important here which we will see, which is, let's say, change in MSME definition, etc. Along with these we also have to see certain current affairs that are important. इकोनॉमी में current affairs की अच्छी बात क्या होती है कि कोई major current affairs नहीं है, right? Major concept is not there. जो चीजें हैं वो हैं but छोटी छोटी हैं, right? For example, there is a concept of variable reverse repo rate this year. Variable reverse repo rate is not very difficult to teach you now. Why? Because you know what reverse repo is. थोड़ा सा change होगा. Inflation के figures आ गए. These are current affairs. Inflation I don't have to teach you. Right? So these are not that difficult to teach. So I think I'll take 2 more classes, one on Monday and one on Tuesday. Now with economy, that will help us finish everything. One more important thing that we are left with is financial technologies. So 2 max, 2 classes. If in case थोड़ा extend होता है तो maybe I'll give you 1 recording, but मेरे हिसाब से 2 में हो जाना चाहिए. These are the things we are left with. Now what we will do is a test. Now we'll do a test of about 20 questions, right? I'm not giving you any break. I hope आपने कल की क्लास रिवाइज करी हो. I have not taught you a lot today. Request is to please read this document properly. ठीक है, इस document को properly पढ़ लेना, right? Logic is clear. Small facts and tidbits you will have to remember. अभी हम एक टेस्ट स्टार्ट करते हैं. I'll just give you 1 minute. I hope you are ready. Ready हो तो चार्ट में ready लिख देना. We'll start with test of agriculture. और आज कट ऑफ नहीं देता मैं आपको. चलो, आज थोड़ी बात हो गई है अबाउट keeping calm and actually having a good weekend, so no cut off thing will be put on you. वैसे तो मैं ऐसे ही टेंशन लेते रहते हो, तुम लोगों को सब आता है. As far as I have seen, chat response, of course it's not personal, chat responses are broad, but as far as I have seen you remember fairly well यार. मतलब ऐसे कोई दिक्कत है नहीं. तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम will more so be a problem of you buckling under pressure than actually having a problem of not knowing enough content. Anyway, so we'll start with the test. First question is on your screen. Timer is on your screen. I'll open the chat. I'll start again. Open the chat and make it private. ध्यान से पढ़ना. Silly mistakes के चांस ज्यादा हैं. आता तुम लोगों को सब कुछ है इस टेस्ट में. These are all previous year questions of UPSC only. So there are 21 questions in total. Approved लिखा है वहां. Approved. ये गलती मत करो यार तुषार जी. Approved लिखा है वहां. Decided नहीं लिखा है.
Oh, sorry, chat is public. My bad, my bad. Sorry, sorry, sorry. Sorry. चल सेकंड क्वेश्चन अब नहीं रहेगी चैट पब्लिक. क्वेश्चन 3. I expected you will get this right, but unfortunately you didn't. Anyway, question 6.
चलो ऑप्शंस नहीं बताऊंगा. Question is CCA announced MSP for which of the above? I'm not showing you the options. Just answer like this only. How many of the above answer कर दो. ऑप्शंस दिखा के तो इजी हो जाएगा. Okay. This question actually was from the economic survey of that year. So you just give it a shot. Even if you don't know, it's fine. उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में लिखी थी ये स्टेटमेंट. सो इवन इफ यू डोंट नो दैट्स ओके. But logically, you should be able to find the answer. इसमें तो इतना टाइम नहीं चाहिए. So I will just move on to the next one. Yeah, solve this one. And second, जो second option में process का नाम है वही बता देना. There is a name of a process that's involved in the second option. Tell me the name of that process also. Good.
Okay, let's look at 12. Good question. देखते हैं. ज़्यादा zoom हो गया, sorry. This is fine. I'll give you some more time for this. I'll give you 20 more seconds. ठीक है, चलो. I won't put a timer. Give you 20 more seconds for this. You can now look at it again. 20 more seconds. Okay. 30. $14. Okay, Swarnim. Good. Mostly you guys have the right answer. चलो आगे चलते हैं.
This year's question, 2024. में क्वेश्चन विजिबल नहीं है, तो I'll just write it. Which of the following best describes small farmer large field? That is the question. Or I'm running the timer in my phone, no worry. All right, next. Carefully read. Carefully.
Last question. All right, चलो आंसर्स डिस्कस करते हैं, देन आई विल सी योर स्कोर्स. थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. Fair and remunerative price of sugarcane is approved by CCEA. इस टाइम पे चैट पब्लिक थी तो सबने एक दूसरे का आंसर देख लिया. दिस इज नॉट टफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें पता नहीं थोड़े बहुत लोगों ने गलतियां क्यों की हैं. इन इंडिया द मार्केट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द APMCs and APMCs are under state jurisdiction. So states will make the act for APMCs, right? Again, should not be a problem. This also some people did not get right. Again, AIBP क्यों बना था? AIBP was made for completing the old irrigation projects. Remember, I had taken this example even in the budget deficit, monetize the deficit example. तो ये तो provide loan assistance to poor farmers. This is not right. Command area development program. Now this, the answer hinges on this option, right? Command area development program में what is command area? Command area is basically another name for watershed. अगर ये एक एरिया है, यहाँ से a river is flowing, so from all the area where water drains, that is command area, right? So this statement is correct. Answer is B. And with logic, I thought you guys will be able to get it right. Then we have seed village concept, right? ये तो हमें, this you should have gotten, हमने पढ़ा है ये. We've read seed village. It involves the farmers for training in quality seed production and make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost. Answer is B. Let's move on. The nationwide soil health card schemes aimed at what? Okay, expanding the cultivable area under irrigation, enabling banks to assess quantum of loans to be granted on the basis of soil quality. Okay, and the third is checking overuse of fertilizers in farmlands. This is not an objective, obviously. This is not an objective, only this is the objective. Answer should be this, which is C only. I think this also should not be a problem. This is ENAM, just in case you were confused. ये ENAM है. Again should not be a problem for most people. Electronic trading portal for agricultural commodities. We are linking 1000 APMC so that people can get access to markets of the entire country. This is correct. Access to nationwide market, prices commensurate with quality of their produce, also correct. Answer is C. Question number 6. Question number 7. हाँ, इसकी बात करते हैं. इसमें आए बहुत अलग अलग responses. We got a lot of various other various types of answers in this question. What is finger millet? ये बता दो बस. What is other name for finger millet? Other name for finger millet is, ये बता दो, रागी. Finger millet is रागी. तभी वो मिलेट्स वाला टेबल दिया आपको आज पढ़ने के लिए. Because now this will change your answer. अगर आपको पता है रागी है, then this should not be a question, difficult thing to answer. Answer here is 2, 4, 5 and 6. Direct जो हमने पढ़ा है वहीं से है. But you need to know that finger millet is ragi.
ना, हाँ ये क्वेश्चन, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द एफसीआई is MSP plus. देखो MSP is for cost of procurement plus incidental to procurement is the idea of storage and transport to the godown, and further they will take cost of distribution. So MSP plus procurement incidentals, which are storage and transport costs, and along with that there will be distribution cost. Answer of 8 will be C. Okay. अब ये उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में था, बट थ्रू लॉजिक यू शुड बी एबल टू गेट दिस आंसर दैट इट इज वेजिटेबल ऑयल्स, बट इवन इफ यू डिडंट, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. अब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इज इंडिया. पूरी दुनिया को बासमती पसंद है, राइट? दिस इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व. अब केमिकल फर्टिलाइजर्स, retail price is market driven. Absolutely not. Price of urea is 242 rupees per bag, fixed since 2012, has not changed since 2012. First statement is wrong. Second, ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas. This is correct. Haber process. Sulfur, raw material for phosphoric acid fertilizer, is a byproduct of oil refineries. This is also correct. आंसर इज बी 2 and 3. 3 अगर आपको नहीं भी आता था तो जब मैं आपको एनवायरमेंट पढ़ा दूंगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है? शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. अब दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, गो बैक टू द बेसिक्स. इन्वेस्टमेंट इज मनी स्पेंट फॉर व्हाट? ये बताओ एक बार. इन्वेस्टमेंट इज मनी स्पेंट फॉर व्हाट? Investment is money spent for what? Capital, right? Capital, yaar. Capital. Anything that gives future stream of benefits is capital. Investment is money spent for capital. What is clear description of capital? It is tools and technologies that help in production. याद करो ना, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था. अब देखो, minimum support price will not lead to generation of any tools and technologies, right? अच्छा, computerization of PSES will, yes, it will lead to generation of tools and technologies. Social capital development is also part of capital. Social capital is also part of capital, so this should also be right. Free electricity supply will not lead to development. This is subsidy, right? Waiver of agricultural loans, again subsidy, will not lead to development of tools and technologies. Cold storage facilities, yes, will lead to development of tools and technologies. Answer is C, 2, 3 and 6. Basic question है. अब, which of the following factors or policies were affecting the price of rice in India in the recent past? Of course, the level at which MSP is there, it will affect. गवर्नमेंट कितना ट्रेड करती है, गवर्नमेंट कितना स्टॉक पाइल करता है, और गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज देती है. दिस विल ऑल अफेक्ट द प्राइस ऑफ राइस. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 शुड बी डी. अब किसान क्रेडिट कार्ड, short term credit support is given for which of the following purposes? Read option 5. Construction of family house and setting up village cold storage facility. This obviously cannot be right, right? So we can eliminate the fifth option. Should not be a problem. अब हम options देख लेते हैं. सिर्फ इतना करके भी, if you just eliminate fifth, you should be able to get the answer, that is B. Now we can look at the other statements also, just to confirm, right? So working capital, yes. Combined harvesters, tractors, mini trucks, no. Consumption requirement, yes. Post harvest expense, yes. Ab, in case of all cereals, all pulses, all oil seeds, procurement as MSP is unlimited in any state or UT? Absolutely not. In case of cereals and pulses, MSP is fixed in any state or UT at a level to which market price will never rise? No. It is fixed as a price floor, not as a price ceiling, right? So even second statement is wrong. Answer here is D. पढ़ चुके हैं, should not be a problem.
इसमें मोस्ट लोगों का आंसर ठीक है मुझे, बट ये बता दो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल बी विच सेक्टर एक्टिविटी? आंसर दिस फर्स्ट. It will be tertiary, not primary. This is storage service. Storage service, right? अच्छा आपको उसमें डाउट है, I'll just explain. This is service of storage. This is incorrect. This is correct. This is incorrect. This is correct. Answer is only 2. एक स्टॉक पाइलिंग वाले में डाउट था, वो मैं बता देता हूँ. इसमें तो should not be a problem. ये तो समझ आ रहा होगा. इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी. This is the one where you might have a problem. देखो, it is for agricultural capital. No, it is for agricultural use, not for construction of family house. And village cold storage facility जो बनेगी at a combined level, उसके लिए थोड़ी आप किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लोगे. It is written that you will get short term credit. Short term credit is not for constructing your house. हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए अलग स्कीम है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री आवास योजना. Right? Even with eliminating option 5, you should get the answer. अब small farmer, large field, actually ये word breakdown का question है. If you look at it, options देखते हैं. Small farmer, large field. This is the question. ठीक है. Resettlement of large number of people uprooted from their countries due to war, giving them large cultivable land, does not seem right. Many marginal farmers in an area organize themselves into group and synchronize and harmonize selected agricultural operations. This is the actual answer. But बाकी देख लेते हैं. Many marginal farmers in an area together make a contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body. A company extends loans, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers so they produce agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production. Also wrong. But again, अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं. But such questions we see, it's इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, these depend on your level of intuition. आपको कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं. अब Government of India provides MSP for Niger, correct? It is cultivated as kharif crop, correct? Niger seed oil for cooking, correct? Answer is C, all 3. Question 19. Studied this in class. Digital India Land Records Modernization Program. Even this year it's in the news. Central government funded scheme है बिल्कुल. Cadastral maps are made बिल्कुल. Transliterate the records into any of the languages recognized. Yes. जो भी Schedule 8 की languages हैं उन सब में translate करेंगे. Answer is D, all of the above. अब 20. इसमें अब 2021 की बात कर लेते हैं. Let's look at this question. मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और जान के नहीं पढ़ाया. This is a question of actually using your brain a little bit. पहले ऑप्शंस देखो. मैथ से आपको नहीं आता. One statement is wrong, है ना? एक कोई स्टेटमेंट इनमें से गलत है. अच्छा. Controlling alkalinity of irrigation water is possible. Okay. If water is alkaline and I mix a fertilizer with it which is acidic. Water basic है, मैंने उसमें एक acidic fertilizer mix कर दिया तो मैं alkalinity तो कंट्रोल कर लूंगा. ठीक है. Plants will have increased availability. इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Leaching of chemical nutrients is also possible. Leaching is, although we'll read this in environment, leaching is it goes down to the soil. But मैं fertigation कर रहा हूं तो उसका ये benefit होना चाहिए. Now look at this. Efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible. Why is this written here? As a general rule, phosphatic fertilizers are not water soluble. Phosphate is not soluble in water and that is why this statement is incorrect. But again, नहीं आता था directly तो कोई बात नहीं. But this is that question that you should have gotten right looking at the options. If you had to say one statement was wrong, second was most likely wrong. And ऐसे में आपको guess कर लेना चाहिए. Like don't leave these questions. ये यहाँ पर इसीलिए था कि इसको skip नहीं करना होता.
कंपेयर दिस नाउ टू 21. ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना होता है. अगर आपको पहले से पता है दैट पाम ऑयल इज नेटिव टू अफ्रीका तो अलग बात है, then you will be able to solve it. But if you don't, the only correct approach in this question is to skip it, because most people, आपने शायद अब आंसर देख लिया तो आपको पता है, most people don't know this fact that palm oil tree is actually from Africa. तो अगर आपको नहीं पता, the ideal thing to do here would be to skip this. आंसर मैं बता देता हूं, 1 is wrong, 2 and 3 are correct, answer is B. ठीक है. अब एक बार जरा आप लोगों के स्कोर देख लिया जाए थोड़े से. 42 में से स्कोर बताना प्लीज, 21 में से मत बताना. सिली मिस्टेक्स लिखते हैं स्कोर के साथ, हमेशा स्कोर के साथ सिली मिस्टेक. अवॉइडेबल मिस्टेक जरूर लिखते हैं साथ में. एनीथिंग अबव 30 इज गुड ऑनेस्टली. बट यार अब ना वी आर गेटिंग डेंजरसली क्लोज टू प्रीलिम्स. तो अब ना यार ये अवॉइडेबल मिस्टेक्स नीड टू बी कंट्रोल्ड. अब ये जो अवॉइडेबल मिस्टेक्स, इस पे बनाऊंगा मैं वीडियो यूट्यूब पे. ये जो अवॉइडेबल मिस्टेक्स है ना, दिस नीड्स टू कम डाउन. करेंगे इस बारे में बात, करेंगे डेफिनेटली. विल टॉक अबाउट दिस. Anyway, thank you for your time. I think next class I will take with you on Monday. I will have to ask Varun sir कि उनका IR का शेड्यूल का चल रहा है. मेरा आइडिया ये है that I will take the class next time with you on Monday and one on Tuesday, and on Tuesday we'll finish these things that are left in current affairs. Okay, so see you now on Monday at 4:30. Please remember to do this. ये जो अनसर्टेनिटी वाली बात हमने करी थी, ये जो बात हमने करी थी, प्लीज इसको आज ही खत्म कर लें. आज नहीं तो वीकेंड पे जरूर, मतलब संडे को जरूर खत्म कर लें. राइट? ओके, ऑलराइट. थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू ऑन मंडे. बाय बाय.